Okay, good evening, everyone. Hello. I hope my voice is audible. Good. So let's start the session for today. Last class, we discussed about lots of things like we have done the authentication using what? Using database. And we use here what? Our Spring Data GPA. The Spring Data GPA concept. By using that, we have done our authentication. That means first we have registered one customer, and based on his credential, he is able to authenticate himself. And how we did that? So we have followed two approach. One approach that what we used, that means we use the what is that? Custom custom user detail service. Custom user detail service we used. So user detail service is an interface and it is having a particular method. Method का नाम क्या था इस interface का? That is load user by username. That was the method name, string username. This method belongs to user detail service interface. And we did here our custom implementation. We wrote here. And this method having a return type. Its return type क्या है? Load user by username का? That is user details. This is the also an interface. मतलब इसका implementation class. This method has to return. So the first step, what we did, if you are not using this, let's say that we are not using our database related authentication. In that case, our authentication provider, basically it is going to use the predefined class, that is in-memory user detail service. We have seen already. But since we are not relying in this in-memory user detail service, it is not going to use in-memory. We are going to store that in our database. That's why we need to depend upon our implementation. So we wrote our implementation of this interface, the user detail service, right? And where we have implemented this method, like load user by username. And in the first example, we return the one of the implementation of this user detail class. That is what? User class. User class is a very, you can say, flexible class. And in this class, we just make use of this class to return the object of this user class from this method. Then in another example, what we did, we wrote the entire implementation of this interface in our class, customer user details. And in that we have configured our object and we return our object. चूंकि ये इंटरफेस है तो कोई भी इंप्लीमेंटेशन आप रिटर्न कर सकते हो. तो पहले केस में हमने यूजर क्लास जो इसका प्रीडिफाइंड इंप्लीमेंटेशन है हमने इसे ही कस्टमाइज करके रिटर्न कर दिया था, और दूसरे केस में हमने इसे खुद से इंप्लीमेंट करके और हमने इसे रिटर्न किया. That was done here. That is the first approach. Next, what we did here, we know that this custom user detail service is gonna used by whom? ये user detail service को use कौन करता है? Authenticate करने के लिए authentication provider. And who is the default authentication provider? That is DAO authentication provider is the default one. तो ये DAO authentication provider की जिम्मेवारी होती है कि इस user detail service का use करे, मतलब इस load user by user को call करे आपके class पे. Okay, और इसे आपको user details मिल जाएगा, and that's what it is doing here. This user details it is returning our class. So this custom DAO authentication provider will do all the magic. It will going to match your password among this whatever the user details is having, their authorities, and it will compose the authentication object. Then the second example we did what? The next example we did, we implemented our own custom authentication provider. Our own authentication provider. उसके अंदर method कौन सा था? We have seen that the method name is what? Authenticate. Return type is authentication. And method name is authenticate. And parameter is also authentication. Like this. So in our implementation of authentication provider, we don't require these classes. We simply just override this method. There's another method, support method is also there, where we need to define that which type of authentication it is supporting.
और ये मेथड बेसिकली कॉल कौन करता है? In this method, what we did, we just wrote our logic. We load the user details from the database. Then after what we did, we compare the password, matches the password with the password encoders manually. All the logic we have done. Now this method will be called by whom? Authenticate method will be called by whom? Another authenticate method of authentication manager. इस मेथड को, ये आपका ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का मेथड है, इसे कॉल कौन करता है? इसे कॉल करता है हमारा ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और इसके अंदर एक मेथड होता है, सेम इसी तरह का मेथड होगा, दैट मेथड विल बी देयर। So this method internally, authenticate method will going to call this authenticate method, but it is not recursion, क्योंकि ये authentication manager का मेथड है and this method belongs to authentication provider. और इस मेथड को कॉल कौन करता है? आपका फिल्टर, जिसमें ये ऑब्जेक्ट उसे पास करना होता है, जो इनिशियली आपकी यूजर नेम पासवर्ड को रैप करके और वहां से ये ऑब्जेक्ट हमारा बनता है, इस मेथड को पास किया जाता है। And then we have done that all our authentication. Now, last class we created that example. So what I did for your simplicity, I have uploaded those example both, but I have extracted the both example. Like that, हम एक ही example में authentication provider भी और दोनों ने हमने लिख रखा था, लेकिन मैंने कल के क्लास में आप देखोगे LMS पे, तो मैंने जो एप्लीकेशन अपलोड किया है, दो एप्लीकेशन, एक DB1 है जिसमें हमने यूजर डिटेल को इंप्लीमेंट कर रखा है। दैट मींस हियर इफ यू नोटिस दैट इज service. So here we have used that user detail service and user details class. Both, that means we have not overridden the authentication provider. But another example, that means I have separated, that is here. Spring Security DB app with authentication provider. This both application I have uploaded yesterday on LMS notes or on your LMS. So please refer that one. So in this class, if you notice in the service, I have just service, customer service and IMPL and my authentication provider. I have not there that particular those classes. That means customer user details and customer user detail service classes. Those classes is not there. So I have separated both one. तो इसमें सिर्फ हमने अपना खुद का authentication provider लिखा है, जो कि कर क्या रहा है? Let me show you. Which is just which is having this authenticate method, which is loading the data from that repository and creating that authentication object. That means username, password, authentication token. This object basically is known as your authentication object. Authentication is an interface, and this is the implementation class. So this thing we have done ourselves. This is that authentication provider, custom authentication provider. जबकि पिछले वाले एग्जांपल में जो था, वहां पे हमने DAO ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को ही यूज कर रखा है, बस हमने अपना यूजर डिटेल सर्विस यहाँ पे लिख लिया है, which is going to be used by the DAO authentication provider. DAO authentication provider is safer to use. Of course, it is safer and it is recommended to use because it is internally doing lots of things. Not only comparing the password, it will check that whether the credential is right or not, session is expired or not expired. Lots of other activities also do. That's why it is recommended to use this approach only. Only if you have this specific requirement. I told yesterday ki if you want to check that user belongs to a particular country, user age should be 18 years, or some custom requirement is there. In that case, you can think like that to override your authentication provider. Okay. Now there is another one thing. Let me just run this example, DB1, and I want to show one other doubt some student may have. So let me first run this example. I have dropped all the databases and tables, so it is creating from the beginning. So my application is up and running. First of all, I need to register one customer. So http://localhost 080/customers, and it should be post. Let me add one customer details in the body. So what were the details I need to pass to the customer? Let me go into the model. Name, email, password, address.
So this is the first record I'm going to submit. Good. So it is got registered. Let's try to register another one. Password should be same. Address, let me change that. Should be colon. So two user got registered. अब जब हम इसे log in कर रहे हैं, so if I want to log in, so I need to just use that other one that is here. You can notice sign in, and here we need to use the get request body not required. But I cannot do that sign in right away. So if I just do that one, it will say that here it is unauthorized. That means you are not allowed to do. So in order to pass the username password, go to the authorization tab. Here you need to select the basic auth, and this is the username by which user you want to log in. Let's say that with Ramesh, I'm going to log in. So here, Ramesh is logged in successfully. Now I'm able to call other APIs so that if I say that I want to call customers to get all the customer details. So get method, and here I'm able to see that all the customer details. That means once I need to log in. Now, some user what they used to do in some example in Stack Overflow and some other variants. Here, if you notice, I have passed the credential through that authorization tab, authorization, and here basic auth. Basically, this details we have already discussed कि ये जब हम पास करते हैं डेटा तो इस तरह से जाता नहीं है. ये डेटा हमारा कैसे जाता है सर्वर के पास. ये दोनों डेटा हमारा इनकोड हो जाता है बेस 64 इनकोडेड वर्जन, जहां पे एक ऑथराइजेशन हेडर बेसिक स्पेस के बाद वो हमारा जो बेसिक 64 इनकोडेड के बाद जो टेक्स्ट मिलेगा वो जैसे आप यहाँ पे हेडर में देखो. सो इट शुड बी लाइक दैट. हियर ऑथराइजेशन and here basic, and this is your what base 64 encoded value of your username and password. You can decode it and you can see that what is the username and password. But this is the proper way, and this is the right way to send that details. But some example, you may notice that they are using what they are sending the username and password through the request body, not through the header. This is the recommended approach. Always you should use. Suppose that if you are calling this endpoint from your front end, JavaScript, Angular, तो आप टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह दिखाओगे जहाँ पे यूजर यूजरनेम पासवर्ड एंटर करे. फिर आप वो टेक्स्ट बॉक्स को से वैल्यू को निकाल के यू नीड टू कॉल बेस 64 वाला कोई आप एपीआई के मेथड को कॉल कर लो और वो वैल्यू बेस 64 इनकोडेड हो जाएगा. यू नीड टू अपेंड दैट इन अ हेडर एंड देन यू कैन कॉल योर एपीआई right away. This is the proper way to call that API. If you just recall or if you watch that our front end example in which I have shown that this one also. But sometimes people used to do the login using passing the username and password through the request body as well. So what I have done that I have created one simple example to show that example as well to you, so that you have the idea about both approach. कि हम अगर request header से हम username password ना भेजें, हम चाहते हैं request body से username password भेजना, which is not recommended for the security purpose, but still if you want, you can utilize. Let me show you. So what I have done, I have created another project. That is a simple project. So let me stop this one. That application also I will share with you. That is here, Spring Security using request body. So in this example, let me first show you what are the things are there. So it's a very simple example. I have not used any database. I have just used in-memory database. In-memory user details service. So in the pom.xml, as usual, nothing great. That is your Spring Boot, Spring Security, Starter Web, DevTools, and nothing more than that. Okay. Next, what I did here in the SRC main Java, I have not created any database schema or database like that because I just use in-memory. Okay. And now, if you notice, that is our here my controller. In this controller, what is there? First, I have this two endpoint. This is the hello one, hello two. This is the welcome one. It will return welcome two. As simple as this. Hello one, it will return welcome one. Hello two, it will return welcome two. This is the REST controller. Okay. Now, whenever you want to do the sign in, since I have applied this Spring Security, मतलब ये by default दोनों API protected हो जाएंगे. अब इनको कॉल करने के लिए आपको पहले ऑथेंटिकेट करना होगा या फिर आप दोनों को white list करना. So I'm not going to do the whitelisting. I'm going to use the proper authentication. So this is here what post mapping I have used to do that signing. Now, listen carefully how I'm just doing this signing. First of all, from the request body, I'm taking the login bean.
मतलब इस बार हम यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी से लेंगे। तो हमने लॉगिन बीन के एक ऑब्जेक्ट में रैपअप कर लिया है। सो इफ यू नोटिस दिस लॉगिन बीन, आई हैव दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड and the getter setter. Username and password, using that I will take the credential. Okay. So this is the request login bean. Now the next thing, in the older version of Spring Security, we just need not manage the session, क्योंकि एक बार जो login हो जाएगा ना, तो हमारा HTTP session अपने आप वो अगले request के लिए हमसे फिर username password नहीं मांगेगा. But to the latest version, we need to do some trick. For that one, I took the another parameter HTTP servlet request, so that I can take the session and I can append the session through that next subsequent request. For that one, what I did here, let's see here what I have written the logic in this. First of all, what I did, I injected here authentication manager. ये कहाँ से इंजेक्ट किया है हमने, अभी बात करेंगे इस बारे में. But here I have just auto-wired this authentication manager. If you recall our diagram, see this authentication manager. So authentication manager will invoke the authentication provider's DAO manager. That's fine. We already discussed about that so many times. So I just auto-wire this authentication manager. और हमें पता है authentication manager के अंदर एक method होता है authenticate, जिसका parameter क्या होता है, authentication object. We have written it already here. So this is the authenticate method, right? Here in the authentication manager, this method is also there, and parameter is authentication. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें हमने खुद से ही authenticate method कॉल कर दिया. अब ये फ्लो हम स्टार्ट करते हैं. So by default authentication manager, please call this authenticate method. अब ये हमारा authentication manager का authenticate method कॉल होगा by passing here what, this is your object of authentication. Authentication जो हमारा इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, और इसका implementation object है username password authentication token. We discussed so many times. And here we have passed that some details like login bean.username, login bean.password, जो कि डिफॉल्ट ऐसा ही होता है नॉर्मली. तो ये हम ऑब्जेक्ट हमने खुद से बनाया है यूजरनेम एंड पासवर्ड लेके, और ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल कर दिया. अब ये ऑथेंटिकेट मेथड किसके पास जाएगा, गिव मी द आंसर. By taking this username and password, this authenticate method will go to which flow? That means which component? It will go to no, ये authentication manager का authenticate method है. अब ये मेथड इंटरनली किसे कॉल करेगा, हमने ये मेथड को कॉल किया. इट विल गोइंग टू कॉल टू द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल होगा. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर किसका यूज करेगा, दैट मींस कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज होगा, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर. वो किससे बात करेगा, इन मेमोरी यूजर डिटेल्स, इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, या फिर अगर हमने कहीं अपना यूजर डिटेल लिख रखा है तो उससे, राइट. सो द फ्लो विल गो एंड एट लास्ट इट विल रिटर्न द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट. अब ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने रिटर्न किया हमारे प्रोग्राम में, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पुट करें कि जो फर्दर इंटरेक्शन हो तो हमारा बार बार हमसे यूजर नेम पासवर्ड ना मांगे. फॉर दैट वन व्हाट आई डिड, फ्रॉम द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर आई कॉल वन मेथड गेट कॉन्टेक्स्ट. सो आई गॉट दैट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, एंड इन दैट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट आई जस्ट कॉल वन मेथड सेट ऑथेंटिकेशन, पास दिस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट कि है अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आई ऑथेंटिकेशन होने में तो ये एक्सेप्शन देगा. दैट्स व्हाई आई केप्ट दैट इन अ ट्राई ब्लॉक एंड कंट्रोल विल रिटर्न दैट ऑथेंटिकेशन फेल. लेकिन अगर ये हमारा सब कुछ सही रहा एंड ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, मतलब सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन इज हैपेंड, एंड दिस ऑब्जेक्ट विल हैव व्हाट, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट भी एम्बेड हो चुका है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, एंड व्हाट वी हैव डन हियर. Zayed Siddiqui is saying that, sir, what is login bean? Hey Zayed, login bean is just a simple class I have created which will take that our username and password, जो हम अब यूजर के बॉडी से, रिक्वेस्ट के बॉडी से पास करने वाले हैं. Does it make sense? Please confirm. Cool. So here we get the authentication object which will have the principal object, मतलब authenticate हमारा हो चुका है यूजर. अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई या authentication नहीं हुआ, so it will throw an exception, control will go to the catch block, it return authentication fail. अगर सब कुछ ठीक रहा तो authentication object हमें मिल चुका है. I need to keep that in a security context. So normally ये अपने आप यहाँ पे हमारा authentication manager रख देता था हमारा, लेकिन इस बार चूंकि हमने खुद से ये मेथड कॉल किया है, so I need to keep this object in a security context.
और उसका क्या तरीका है? That is, I need to call the security context holder dot get context. I got the security context and I keep this authentication. So for my further interaction, subsequent interaction, it will not ask for me the username password. And to enable our HTTP session, which is not part of your or what you're not supposed to configure in our older version of Spring Security. But here, in order to transfer our JSON ID for the subsequent request, we need to do some trick. First of all, from this HTTP request, we need to get the session. This is the way to get the session. और ट्रू का मतलब होता है कि अगर सेशन का ऑब्जेक्ट पहले से है तभी आप मुझे दो, नया कोई सेशन का ऑब्जेक्ट मत बनाओ. Okay. If I just don't pass the true here, by default it is a false. So every request it will create a new session object. But I'm saying that अगर है तो हमें दो, otherwise don't create a new session. Now, then after in this session, I am setting the attribute. किस context repository से context का key और security context का जो related value है उसे आप सेशन के अंदर रखें. So that it will create a JSession ID for us. इन दोनों लाइन का मतलब ये होता है कि JSession ID अगले इंटरेक्शन में हमारा शेयर होता रहे from the client to the server and it's returning authentication successfully. Let me run this program, but before moving on, let me show you app config. Now in this app config, first of all, I need this authentication manager जिसे मैं auto wire कर रहा हूँ. So in the older version of Spring Security, there is a different way, but in this type of Spring Security, this is the way to, you need to register authentication manager bean. So here it is. I have written a method, authentication manager, return type is authentication manager, and parameter is authentication configuration. And from this configuration, you need to call a method get authentication manager. So the authentication manager return hoga, and this authentication manager bean will be registered with the Spring container and which will be auto wired over here. Cool. Next, this is our simple configuration. Security chain. इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? पहले तो हमने hello one और sign in इस बार हमारा post request है. If you notice this sign in, it is a post mapping. So इन दोनों को हमने क्या कर रखा है? If you notice permit all whitelist कि कोई भी इसी यूजर को कॉल कर ले, sign in को और hello one को. hello two को हमने नहीं whitelist किया है, इसके लिए आपको मतलब रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तभी आप hello two कॉल कर पाओगे. लेकिन hello one परमिट है, मतलब कोई भी कॉल कर सकता है without authentication also. Other requests authenticated. Since the sign in is a post request, I need to disable the CSRF and these remaining things, you know that. Next, I have used that in-memory user detail service. So here it is, and I have created two users. One is an admin whose username is admin1234, and one is a user whose username is user and 1234. Am I clear till this point? Please confirm. Cool. Now let's run this program, see the output. So my application is up and running. So hello one is a whitelisted. So I can, without passing any username and password. So let me just go to the inherit auth form, and here I'm just calling this API that is hello one. I need not give any kind of username and password. I'm able to directly access this. So welcome one. But can I call hello two as well? No, I cannot call that. It will give me the forbidden. Sorry, unauthorized. 401 unauthorized. Now, in order to call this hello two, what I need to do? Hello two को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? I need to do the signing. So this time I need to do the signing. लेकिन इस बार का जो साइन इन होगा वो यूजर नेम पासवर्ड हम यहाँ ऑथराइजेशन हेडर से नहीं बल्कि कहां से पास करेंगे? बॉडी से, राइट? So from the request body, I need to take that username, colon, let's say that admin, and password, that is 1234. From here, I need to give the credential. As I give the request, hold on, this is admin 1234. Is it sign in? Yeah, that should be the post. So authentication successful. Once authentication is successful,
Now I am able to call this get request, and here I can call hello to. Because my authentication got successful, I'm able to access this welcome to as well. Make sense? So in this example, I have not used authorization header to pass the username password. In this case, I just use this request body. Now, one important thing, this is not at all recommended approach to pass the password through this request body. You should always go for what your request authorization header, which was the previous approach. But I told that some example, you might see that the username password is supplied through the request body also, then also you should be very much comfortable. So in this case, if you are taking that details in a request body, you need to create that, call this authenticate manager manually. That means authenticate method manually. You will get the authentication object. You need to keep this authentication object on a security context manually. That is the only difference. I hope it is clear now. Please confirm. Good. So this example also, I will keep that in our notes, LMS. So to save our time for that remaining example, also I have created some example which is there in the notes itself. One more thing I will tell that to you. So one more example, one thing I want to tell that to you, because here I have implemented some modification I have done in the day 14 notes. So previously it was uploaded. I guess you have downloaded these notes yesterday or day before yesterday. So those they have downloaded, please delete that and please make use of this updated, because I have done some updation in these notes. So please make use of this updated notes. Got it? Please confirm. जिन लोगों ने ये डे 14 स्प्रिंग सिक्योरिटी का नोट्स डाउनलोड कर रखा था, तो ये अपडेट हो चुका है। थोड़ा सा इसमें कुछ बग्स थे और कुछ और भी नोट्स हमने ऐड कर रखे हैं, तो आप उस नोट्स को डिलीट कर देना, फ्रेश अभी वाले नोट्स को डाउनलोड कर लेना। अपडेटेड नोट्स इज अपलोडेड देयर। Okay, so we are very much comfortable with this internal flow of authentication provider, authentication manager, security context, and all the details. Now, here we have discussed last class. Before ending the session, we discussed about this one, that is authorization. Authorization, and we took a glance about that. What is authorization? Authorization should always happen after the authentication, right? And authorization will tell that what are the privileges you have. The main objective, how the authorization roles is maintained in the Spring Security using granted authority. Granted authority is an interface which is having a single method, get authority. So using this object only, your roles and authority will be maintained in the Spring Security. और हमारे पास authentication object के अंदर और हमारे user details दोनों के अंदर एक method है get authorities. This method को call किया जाता है internally by the framework to get the authorities, and there are some filters which will going to check whether the user have the correct authority or not to access the particular method or services. Very much, that means in an easier manner, this authorization is also implemented in the Spring Security. We just need to follow some instruction. Okay, so role versus authority also we discussed yesterday. If you have any doubt, please go through these notes. You'll get the idea. One important thing about that, in the role, that means the fine grain permission, and roles are what is the group of authority. That means authority is a fine grain permission and roles are what is the coarse grain permissions. Okay, then we have seen that this role, in order to save that one, you need to use role underscore. That means here the prefix it should be there. For example, अगर हम admin role register कर रहे हैं, so we should register that using role underscore admin, role underscore user. So जो भी आपका role underscore manager, role underscore clerk, like that you need to prefix with the role underscore in a capital letter. It should be the convention we need to follow, because Spring Security uses that maintain the role with this particular prefix. Authority को आप किसी नाम से मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे किसी प्रीफिक्स या किसी कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, बट रोल को जो हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी मेंटेन करता है, by using this prefix it will maintain. So you need to remember this. There is one example of authority. First, authorities is what the fine grain permissions. तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है. Let me show you that the same customer class which is having the same details.
But what I did, let me show this example. I have copy pasted this example to save our time so that we will get the clarity. Let me show you. So here is the example, that is Spring Security Authority app. So open this. And in the POM, similar kind of, there is no any other kind of dependency. All the dependency you know already. In the resources, same thing. Our previous example, nothing great here. All those details is as it is. That is our JP related dependency. बाकी की सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूँ आपको. ये सब कुछ प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है. लेट मी शो दैट द मॉडल क्लास. In a model, I have taken the two entity classes. One is the customer, one is its authority, which is having customer. One customer can have multiple authority. Authorities are a fine grain. मतलब वो view the account details, update the account details, view the loan details, anything he can do that. So there is a one customer and there is one authority entity. Both are the entity, and we know that how to apply one-to-many relationship. This is authority. कस्टमर में क्या क्या है, सेम पिछला वाला एग्जांपल है. कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, लेकिन एक हमने और प्रॉपर्टी ले ली है, अथॉरिटीज. दैट इज लिस्ट ऑफ अथॉरिटी. ये क्या है, ये हमारा अथॉरिटी जो हमने एक मैनुअल एक एंटिटी ले रखी है. इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, ऑथ आईडी जो कि ऑटो जनरेट होगा, नेम, और किस कस्टमर का ये हमारा अथॉरिटी है. मतलब सिर्फ इसमें एक ही फील्ड हमें देना है, नेम, और ये कस्टमर हमारा जेसन इग्नोर है. व्हाई जेसन इग्नोर, we will discuss about that. You already know, but still we are going to discuss. So basically authority के अंदर तीन फील्ड है हमारे पास, auth id, name, customer. Okay, अभी इस कस्टमर को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब सिर्फ auth id और name. auth id ऑटो जनरेट, नेम हमें पास करना पड़ेगा कि कौन सी अथॉरिटी का नाम क्या है. व्यू अकाउंट, अपडेट अकाउंट, व्यू लोन, व्यू नोटिस, व्हाटएवर इट इज देयर. नाउ कस्टमर और अथॉरिटी दोनों में हमें वन टू मेनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है बाय डायरेक्शनल. कैसे करते हैं हम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. सो वन कस्टमर will have multiple authorities, so it is a list of authorities, and I have assigned within new arrays. Here one to many, and since it is a bi-directional, the authority will have a customer many to one. I hope you got the point. Please confirm. Cool. जेसन इग्नोर, ये मतलब ये आपको पता होगा कि अगर हम कस्टमर के डिटेल को एक्सेस करें तो कस्टमर के डिटेल में प्रिंट होंगे कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड तो प्रिंट नहीं होगा, एड्रेस और लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज. और फिर अथॉरिटीज के अंदर क्या प्रिंट होने लगेगा, कस्टमर. तो कस्टमर के डिटेल के अंदर फिर से अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर फिर से कस्टमर. इट विल बिकम रिकर्सिव साइकिल, इट विल गिव अ स्टैक ओवरफ्लो सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो इन ऑर्डर टू डू सो कि कस्टमर के अंदर सिर्फ अथॉरिटी का नाम डिस्प्ले करे, आईडी डिस्प्ले करे, उसका फिर से कस्टमर डिस्प्ले ना करे. दैट्स व्हाई जस्ट यूज द जेसन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Here I have just used the cascade type all, since I will just update a customer, so or insert a particular customer, authority should also be inserted. Customer को delete करेंगे, इसकी authorities भी delete हो जाएंगे. And here is the map by customer. You know that why, what is the use of map by. Okay. Sudhanshu is saying that sir we can also use JSON ignore on customer side. Sudhanshu कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा. वो क्यों, क्योंकि आप कस्टमर की डिटेल को एक्सेस करोगे ना, तो आपको उसकी अथॉरिटी नजर नहीं आएगी. राइट, आपको हाँ, अथॉरिटी को आप एक्सेस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये अथॉरिटी से दैट व्यू कस्टमर, ये किस कस्टमर का अथॉरिटी है, उसके साथ कस्टमर का डिटेल आपको नजर आ जाएगा, जो हम करते नहीं. हमें चाहिए क्या कि जब हम कस्टमर को हम एक्सेस करें, राइट, when we load the customer, that time we should able to see that authority details. That's why I just use here JSON. Make sense? Good. So now the next one, map by. I hope you know that what is the purpose of map by customer. The relationship is at other side, so that we don't create them unnecessary extra table. But this is a super important fetch type either. Believe me, with this, without this one itself, I spent a whole night to figure out where the problem was. If I just didn't use this fetch type, क्योंकि fetch type आपको मालूम होगा, fetch type क्या होता है, eager मतलब जैसे ही हमारे कस्टमर लोड हो, हमारी अथॉरिटीज भी लोड हो जाए. Right? You might have learned there in your ORM approach, in your hyperlink. By default, it is a lazy type. Lazy का मतलब कस्टमर लोड हो जाएगा, लेकिन इसकी अथॉरिटीज लोड नहीं होंगी.
और उस वक्त क्या हो रहा था, हमारी अथॉरिटी बार बार हमें एक्सेप्शन आ रहा था जब भी हम अथॉरिटी को एक्सेस करने जा रहे थे, बिकॉज उस वक्त हमारा सेशन बंद हो चुका था, और सेशन बंद हो जाने के बाद आपको वो डेटा मिलेगा नहीं. सो वी नीड टू यूज द fetch type eager. That means as soon as I will load the customer details, its authority, the second level object also should be loaded in the RAM. Am I clear? Please confirm. So I hope that you have understood between this relationship authority or customer. Okay, this is the authority based authentication. Now let's move on and see here. I have this customer repository, this interface, nothing great here. And in that one, remaining all those things are very much similar, but I will move through this one, that is our service. Okay, सर्विस में बात करते हैं. पहले सर्विस, कस्टमर सर्विस. यहाँ पे हमारे पास वही 3 सर्विसेज हैं. रजिस्टर करना, गेट कस्टमर डिटेल्स बाय ईमेल और गेट ऑल कस्टमर डिटेल्स. और ये रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से चेंजेस हैं. उस चेंजेस को समझने के लिए पहले हम कंट्रोल से शुरुआत करते हैं. सो कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कस्टमर सर्विस एंड पासवर्ड इनकोडर, पिछले एग्जांपल की तरह. ये वन हेलो वन यूआरएल टेस्ट, मतलब इसे कॉल कर सकते हैं हम आफ्टर ऑथेंटिकेशन. दिस इज विल रिटर्न द वेलकम टू सिक्योरिटी. अब पहला जब हम कस्टमर को रजिस्टर करेंगे, सो व्हेन वी डू दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर, दैट टाइम आई नीड टू पास दैट कस्टमर ऑब्जेक्ट. लेकिन इस बार कस्टमर ऑब्जेक्ट के अंदर अथॉरिटीज की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज इज देयर. सो हाउ आई एम गोइंग टू पास दिस? सो आई हैव गिवन द सैंपल डेटा हियर. Name I need to pass, email, password, address, and this is the list of authorities I need to pass. हमने इस राम को 2 अथॉरिटीज दे रखी है. अथॉरिटीज ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है. दिस इज दैट अथॉरिटीज, दिस इज द प्रॉपर्टी. सो हमने नेम दे रखा है, पासवर्ड, ईमेल और अथॉरिटीज की बारी है जो कि लिस्ट है. सो दैट्स व्हाई इट इज हियर लिस्ट, बिग ब्रैकेट. एंड इन अथॉरिटी आई नीड टू पास ओनली वन ऑब्जेक्ट. That means only one detail. अथॉरिटी में क्या है, एक तो ऑथ आईडी जो कि ऑटो जनरेट है, आपको सिर्फ देना है नाम. And since बाई डायरेक्शनल, कस्टमर की डिटेल हम इसे बाद में एसोसिएट कर देंगे. तो ये हमारी अथॉरिटीज, पहला ऑब्जेक्ट. ये रहा हमारा नेम, दैट इज व्यू ऑल कस्टमर. और इस नाम को हमने 2 अथॉरिटी दे रखी है. सारे कस्टमर को देख सकता है, साथ साथ व्यू कस्टमर. एक कस्टमर को भी ईमेल के अकॉर्डिंग वो देख सकता है. To watch only one customer by using the roll number, his email address also, and to view all the customer also. These 2 authority I have given. You can assign any name or any set of authority you want, because these are not a method name. ये अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो. View account, view loan, whatever the authority you want, you can specify. Make sense? This is not at all a method name. It is a custom things, details. कि add customer, view customer, ये क्या क्या हम परमिशन दे रहे हैं इस राम को. तो राम के पास 2 परमिशन हमें साइन करना है. एक तो सारे कस्टमर को देखना, और एक कस्टमर को उसकी ईमेल के अकॉर्डिंग देखना. नाउ दिस इज द वे हाउ टू रजिस्टर दिस वन. Okay, let me do one thing. I'm going to run this example and doing the similar kind of all those things along with you. So let me drop this, drop database, Masai DB. So my slate is clean. Now I'm going to run this example. So this time my table will be created for authority, the separate table, and my that is customer, the separate table. Cool. So here all those things got created. You could utilize this if you are not interested to create this authority a separate table. So what you can do, you can use this as what, no need to take this authority as a separate entity. You can use your list and you can use the element collection annotation as well. दोनों आप यूज कर सकते हो. No need to take the separate entity. You could utilize as a element collection. वहां पे भी separate table बन जाता है, as we know that, and it will have one-to-many relationship. Does it make sense? Cool.
So my application is up and running. Let me try to insert register one customer. So it should be post and it should be customers, and I need to pass this data. So let me just copy this data from my customer controller. And pass that data. So this is the name, this is the email and password and address. These are the authorities, which is having view all customer, view customer, and hit the request. So I have this RAM got registered with authorities view all customer and view customers authority. अब हम एक और यूजर को ऐड करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तुमने नीचे लिख रखा है ऐड अनदर कस्टमर विथ ओनली वन अथॉरिटी, व्यू कस्टमर. मतलब राम के पास दोनों अथॉरिटी है, सारे कस्टमर को भी देख सकता है, एक कस्टमर को भी देख सकता है. लेकिन अब अगला जो कस्टमर हम ऐड कर रहे हैं, that customer will have only one authority to view only one customer. He don't have the authority to view all the customers. Okay, so in that case, let's try to register this Ramesh. This is the ramesh@gmail.com. Password, address will be that. Let's say Pune, and this time only one authority will be there. So let me just remove this authority. That is view customer. So this Ramesh will have only one authority. Let's try to insert this record. Got it. So here this Ramesh is also inserted. So let me verify the database with the same. Select star from authority. So here 3 authorities I have with the auth ID 1, 2, 3. तो ये जो हमारी authority है 2 नंबर वाले customer का. So if you see that, select star from customer. And both customers are there. Got registered with having their foreign. Okay, so till this point, I hope everyone is comfortable. Please confirm. लेकिन यहाँ पे अब हम बात करते हैं इस रिक्वेस्ट में, यहाँ पे जो कस्टमर को हम ऐड कर रहे हैं. We just use this password encoder to set this, and I have called this service and register customer. Customer register होगा. कस्टमर में जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं डेटाबेस से, सॉरी जेसन से, तो ये डेटा ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरह से पास कर रहे हैं. अब हमें करना क्या होगा, इस कस्टमर के पास तो अथॉरिटीज की डिटेल है, लेकिन इस अथॉरिटी के पास कस्टमर का डिटेल नहीं है. You can use lower letter, upper letter, no problem. It is just convention to use the upper letter, but you can use the lower letter, any word you can use. अब इसे हम use कहाँ पे कर रहे हैं? Once you will understand, see that, then you will get the clarity. So यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, कस्टमर के अंदर तो हमारे पास अथॉरिटी की डिटेल है, लेकिन अथॉरिटी के ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टमर का डिटेल नहीं है. So you know the next what to do. So if you see that here, customer service register customer method, here it is in that customer service IMPM. Now what I did, this register customer, getting that customer की authorities हमने निकाल ली, list of authorities, और हर authority में हमने customer के object को associate कर दिया. We discussed about that one. That means many times. You have to, before persisting the object, you need to, your both object in a bidirectional mapping, they need to associate with each other, right? So customer is having the authority detail, but authority will not have the customer detail. So each authority I'm getting that from the customer. I got that list of authority, और हर authority में हमने customer का reference यहाँ पे add कर दिया, so that our relationship will be maintained. And then I persisted that. I guess this is also not a new to you. We have discussed already in our example so many times in our Spring Data GPU, how to associate both the objects. Okay. Cool. Now this is that the first controller, and this remaining controller are very much similar. Nothing great here. And sign-in controller is also very much similar. Nothing great. Everything is fine. Now we need to configure that this authority. कहाँ पे हमने configure करना है? You know the best. That is app config. See that how this configuration I have done. This is what, since customer register करना है तो हमें इसे permit all करना होगा. Right? अब हम यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, let's see here. Request matcher dot get slash customer dot slash hello. ये जो 2 एंड पॉइंट है, मतलब सारे कस्टमर को देखना और हेलो एंड पॉइंट, ये कौन कौन कॉल कर सकता है, जिसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी हो, प्लीज वॉच केयरफुली. देयर इज वन मेथड आफ्टर दैट, हैज एनी अथॉरिटी. हैज एनी अथॉरिटी,
You just need to use here. Actually, it should not be has any authority. It should be has authority. Has authority. So the person who is having only one authority, view all customer, वही ये सारे कस्टमर को देख सकता है और हेलो एपीआई को कॉल कर सकता है. Got it? Now आपके पास अगर दो तीन अथॉरिटी को असाइन करना है, then in that case you need to use has any authority. सिंगल अथॉरिटी असाइन करने के लिए has authority and multiple authority के लिए has any authority. Listen carefully. Method get customer/**, मतलब किसी हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं. If you notice that customer controller, I'm talking about this endpoint. customer/email, मतलब पाथ वेरिएबल को हम /** से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब व्यू ऑल कस्टमर, व्यू ओनली ए सिंगल कस्टमर. आप ईमेल पास करोगे, आपको कस्टमर का डिटेल मिलेगा. इसे कौन कॉल कर सकता है? हैज एनी अथॉरिटी, वही यूजर जिसके पास ये दोनों अथॉरिटी है. व्यू ऑल कस्टमर, व्यू कस्टमर. तो व्यू कस्टमर वाला सिर्फ एक कस्टमर को कॉल कर सकता है. व्हाट इज दिस स्टार मेंशन दैट इट इज द पाथ वेरिएबल. दिस स्लैश कस्टमर इज अ यूआरआई और उसके बाद कोई भी पाथ वेरिएबल हो, दैट एपीआई विल बी कॉल्ड. मेक सेंस? दिस कस्टमर मींस सिर्फ नॉर्मल कस्टमर, लेकिन पाथ वेरिएबल वाले को हम /** यूज करते हैं. इफ यू रिकॉल लास्ट एग्जांपल वेयर वी हैव व्हाइट लिस्टेड द स्वैगर रिलेटेड API, there also I just use the ***. So here that means all customer, ये तो रजिस्टर के लिए है पोस्ट, और ये सारे कस्टमर को एक्सेस करने के लिए. इसे कौन एक्सेस कर सकता है? जिसके पास अथॉरिटी क्या हो, व्यू ऑल कस्टमर की, वो उसे एक्सेस कर सकता है. और एक कस्टमर को एक्सेस करने का मतलब मतलब जिसके पास व्यू ऑल कस्टमर की अथॉरिटी हो और व्यू एक कस्टमर की अथॉरिटी हो, वो कर सकता है. लेकिन आप मुझे बताओ, हेलो को और गेट ऑल कस्टमर डिटेल्स, क्या कोई ऐसा बंदा कॉल कर सकता है जिसके पास व्यू कस्टमर की अथॉरिटी ना हो? दैट मींस व्यू कस्टमर और कि इसके पास अथॉरिटी ना हो अदर देन व्यू ऑल कस्टमर? नो. मीन टू से दैट आई हैव टू यूजर्स आर देयर, राम एंड रमेश. राम को हमने दो अथॉरिटी मेंशन की थी, ये दोनों अथॉरिटी, व्यू ऑल कस्टमर, व्यू कस्टमर. That means Ram can call these APIs. Am I correct? Please confirm. Yes. अब आप मुझे बताओ, क्या राम ये दोनों API को कॉल कर सकता है? Yes, because view all customer here also. Yes, he can call. अब आप मुझे ये बताओ, इस API को क्या रमेश कॉल कर सकता है? This API Ramesh can call this? Yes, Ramesh can call this because view customer की authority है उसके पास. Ramesh is having the view customer, right? Ramesh just now I have added which is having the view customer, but Ramesh don't have the view all customer. तो Ramesh एक customer की डिटेल को एक्सेस कर सकता है, but Ramesh cannot call hello and cannot call get all customer details. Am I clear? Please confirm. That means this API will be called the person which is having this both authority, view all customer, view customer. These API will be called by only those customer which will have only this authority, view all customer. It's a very simple, Nitish. Let me repeat once again. राम के पास ये दोनों अथॉरिटी है, राइट? रमेश के पास सिर्फ एक ही अथॉरिटी है. Am I clear? रमेश के पास व्यू कस्टमर की अथॉरिटी है, तो रमेश ये तो कॉल कर सकता है. इज इट फाइन? क्योंकि रमेश के पास जो अथॉरिटी मेंशन की हुई है उनमें से ये अथॉरिटी है रमेश के पास. लेकिन रमेश को इनको कॉल करने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए, दैट मींस व्यू ऑल कस्टमर, वो रमेश के पास नहीं है. क्या रमेश के पास व्यू ऑल कस्टमर की अथॉरिटी है? नहीं. सो ही कैन नॉट कॉल दिस. बट राम के पास दोनों को कॉल करने की अथॉरिटी, जहां दोनों जरूरत है उस सारी अथॉरिटी राम के पास है. सो ही कैन कॉल बोथ. एम आई क्लियर? बस आपको ये देखना है कि जिस यूजर से हम जिस कॉल करवा रहे हैं एपीआई, वहां पे जो अथॉरिटी मेंशन है वो अथॉरिटी उस यूजर के पास है या नहीं. अगर वो है तो आसानी से उसे कॉल कर सकता है. अब राम की बात करते हैं, तो इन दोनों को कॉल करने के लिए व्यू ऑल कस्टमर, हाँ राम के पास ये अथॉरिटी है. क्या इसे कॉल करने के लिए राम के पास अथॉरिटी है? हाँ, इसे भी कॉल करने के लिए राम के पास अथॉरिटी है, राइट? सो इसे भी कॉल करने के लिए राम के पास अथॉरिटी पड़ी हुई है.
लेकिन अब बात करते हैं रमेश की। तो क्या रमेश इस एपीआई को कॉल कर सकता है? क्या वो अथॉरिटी है जो रमेश को चाहिए कॉल करने के लिए? हाँ, यहाँ पे मेंशन की हुई है। लेकिन क्या इसे रमेश एक्सेस कर सकता है? इसे कॉल करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, व्यू ऑल कस्टमर, लेकिन वो अथॉरिटी रमेश के पास नहीं है, सो ही कैन नॉट कॉल दिस। एम आई क्लियर? So by using these methods, has authority and has any authority, you can mention the authority list to restrict that the person which is having this authority, then only they are able to call these methods. These APIs. Yes. In second case, no, it's not like that. कि user के पास दोनों होने चाहिए. In second case, call that one user के पास कोई एक authority हो तो काम चल जाएगा. मतलब या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों हो, कोई भी है. जैसे हम रमेश की बात करते हैं तो रमेश के पास क्या ये अथॉरिटी है? नहीं, ये लेकिन ये अथॉरिटी है, इसमें से लिस्ट आउट है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है हैज एनी अथॉरिटी, तो सी द नेम इटसेल्फ इज सेइंग एनी, मतलब कोई भी अथॉरिटी हो तो वो कॉल कर ले. गॉट इट? yes, method name is also self explanatory. So let's try to see that, and remaining thing is as simple, nothing changes here, everything is fine. My application is up and running, so and I have registered already 2 customers. Let's try to check out that whether we are able to call this API properly. So let's try to call using first I2. I'm going to sign in. So get and sign in. First, I'm going to sign in through, go to the authorization tab and basic auth. I'm going to sign in with Ramesh. Let's say that with Ramesh, I'm signing in. Okay. So sign in. Ramesh is logged in. अब क्या Ramesh hello को call कर सकता है? Let's try to check out that. Hello, there is a one endpoint. Let me check is the hello or hello one. Customer controller. Hello. So let's check out that Ramesh is able to call this hello or not. So it is saying that forbidden 403. That means he is not authorized. Recall, हमने बात की थी status code के बारे में. 401 for unauthentication, 403 for forbidden. That means unauthorized. He is not authorized. Right? Sir, if in has any authority, if there are 2 authority, then he should have both authority to use that API. No need is. उसके पास कोई एक authority हो तो use कर सकता है. Has any है, like has authority में आप दो दे ही नहीं सकते. If you try to pass that 2 authority in that has authority, if you try to configure, it will give an error. Has authority का मतलब है कि सिर्फ यही अथॉरिटी होनी चाहिए. अब अगर आप कॉमा देके दूसरा अथॉरिटी पास करो, so it won't allow, it will give an error. Make sense? Please confirm. Has authority, you have to pass only one authority. Has any, you can pass any one authority like this. So I cannot use here hello, but can I call all customers to get the list of all the customers? No, I cannot call this one as well to get all the customer. All customer के DA में आप configuration check करो. To get all the customers, it should have view customer authority. Right? So that means view all customer. View all customer authority. क्या रमेश के पास है view all customer की authority? नहीं है, so ये call नहीं कर सकता. It is forbidden. अब एक कस्टमर को कॉल करने के लिए हमें कौन सी अथॉरिटी चाहिए? क्या रमेश इसे कॉल कर सकता है? हाँ, उसके पास ये अथॉरिटी है. तो कस्टमर स्लैश लेट्स से दैट ram@gmail.com पाथ वेरिएबल हमने पास किया यहाँ पे. लेट्स सी दैट वेदर ही इज एबल टू कॉल दिस. यस, ही इज एबल टू कॉल दिस. Am I clear? Please confirm. Now let's try to log in with what Ram, and let's check out that he is able, how it is different from has role. You will see that. First, let's complete that swapnil authority. Then after we'll talk about the role. Now sign in. And this time I'm giving the username as ram@gmail.com. हाँ, path variable में email pass करना. You can pass that one. I have mentioned that in my controller itself. If you notice the controller.
customer email, and that is through the path variable email. And based on that email, the customer detail will be returned. So this time I am signing with Ram 1234. Yes, got it. So it is got logged in. Ram logged in successfully. अब क्या हम यहाँ पे hello call कर सकते हैं? Yes, we can call this hello easily because Ram is having both authority. Welcome to screen. Can I call customer? Get to all the customer lists? Yes, it is having, क्योंकि all customer list के लिए view all details चाहिए और राम के पास वो authority मौजूद है. So he can call this all the customer details. Can I call a particular customer details? Let's say that Ramesh@gmail.com. Yes, he is able to call this. Mohammad Zaid Siddiqui, what if अगर वो we do not logged in with Ram? It will work with the Ramesh login? No, if you just logged out, then it will not gonna work. If you don't log in, यहाँ पे हमारा session maintain हो रहा है. We are not going to logged out. But once if you try to do the fresh login, then according to that RAM authority only, those route he is allowed to call. Am I clear? Which person is logged in, based on their authority only, those services that is available to him. Over. So this example related notes is also mentioned there, and I have created this example also in that particular application. That application also I will share with you. Okay, यहाँ पे एक छोटी सी changes और है जो आपको बताते हैं. That is also very very important. वो change कहाँ पे है? That is here in the customer user detail service, जहाँ पे authority को हम inject कर रहे हैं. So where we have implemented this load user by username. If only one person is logged in, then until we logged out, we can access URI through the second person. No, we cannot. He's a postman. So postman, what will happen? The session ID will be maintained. लेकिन जैसे ही दूसरा person login करेगा, पहले वाले का session ID will be overwritten. It will be overwritten. Make sense? Please confirm. So here that is, if you notice this load user by username, जो हम database user से fetch कर रहे थे और वहां पे हम authentication को हम user का object, हम इसका object return कर रहे थे. अब इसे कैसे हम implement कर रहे हैं जब इसके पास authority है? तो पहले वाले example में हम बस एक empty array list return कर रहे थे authorities, और इस authorities को हम pass कर रहे थे कहाँ पे? यहाँ पे new user के constructor में. लेकिन इस बार वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार customer के पास authorities है. तो हमें क्या करना है? इस कस्टमर की अथॉरिटीज को एक्सेस करना है और उन सारी अथॉरिटी को इस अथॉरिटीज के अंदर ऐड करना है. अब वी हैव डन कस्टमर डॉट गेट अथॉरिटीज, वी गेट द लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज. हमने इस पे इटरेट किया और सारे को अथॉरिटी डॉट गेट नेम किस ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट में. व्हाट इज द सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी? इट इज द इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी. Spring Security will maintain your role and authority both in this form, granted authority. This is an interface, and simple granted authority is its one of the implementation class. तो हमें क्या करना है? पहले केस में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक empty array list बनाते थे granted authority की और वहां पे हम ऐड कर रहे थे. If you recall our first example of our database, that means last class example. But since we have the authority right now, so customer dot get authorities, we get the authorities. और हर अथॉरिटी को इटरेट करके हम उसे सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी के अंदर रैप कर रहे हैं by using authority dot get name, and we are adding this one to this authorities, and this authorities got added over here. Am I clear? Please confirm. Hello. Then only your Spring Security will know ki which person is having which type of authority and how to restrict them using your configuration. Now यहाँ पे कुछ line commented है यहाँ पे, वो क्यों? Because we have the other option is also there. That means अगर हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने यूजर क्लास में authorities को पास कर रखा है. तो इसका एक और तरीका है क्या यहाँ पे कि customer dot get email password, और instead of doing all the things over here कि इस कस्टमर से सारी अथॉरिटी निकालना, उसे सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी में कन्वर्ट करना
और फिर उस अथॉरिटीज को इसके अंदर ऐड करना। हमने एक मेथड लिख लिया है सेपरेटली, गेट ग्रांटेड अथॉरिटीज, और हमने अपने कस्टमर के अथॉरिटीज को पास कर दिया। ये कस्टमर की सारी अथॉरिटीज कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज, और यहाँ पे रिटर्न है ग्रांटेड अथॉरिटी की लिस्ट। यहाँ से हमने एक नया लिस्ट बनाया है और उसमें सारी अथॉरिटीज को हमने ऐड कर दिया है, यहाँ से ग्रांटेड अथॉरिटी को रिटर्न कर दिया। इट इज मच मोर मॉड्यूलर फॉर्म। तो या तो आपने ये काम हमने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी, और इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ दिस अप्रोच, it will be much more modular use. So you can just directly mention this method. So this method will be called here, and it will take that customer की सारी authority लेगा और उन authority को granted authority का object बना के उसका list यहाँ पे return कर देगा, and that object will be injected. So either you can use this approach, which is straightforward, or you can use this approach, which is modular approach. So the details I have encapsulated in a separate method. Both way you can use. Am I clear? Please confirm. Hello? Good. So that's it for this example, this authorities. I hope everyone is clear about that, कि किस तरह हम user को उसकी authority पे restrict करते हैं, and how we are imposing this authority using has authority and has any authority. If you see these notes as well, so in this, all those things is clearly mentioned. This example is also there. In fact, this thing is also mentioned there. And in the controller also, this data is mentioned. So I just simply to save our time, I have created this application already. So here, if you notice, this notes is also mentioned about this authority and has authority. So has authority, it accepts a single authority for which the endpoint will be configured, and the user will be validated against the single authority is mentioned. Only user have the same authority configured can invoke the endpoint. And has any authority, which will have, you can pass the multiple authority, or user के पास दोनों में से कोई भी authority हो, then he can call that endpoint. Now, what is the role? A role is a group of authority. That means it's a much more coarse grain. We will take a short break, and after that we will see that example of role-based authorization, which is quite simple and very easy to use compared to authority. We will see that after the short break. It is 10:05, so we'll come back by 10:15. Is it okay? Okay, welcome back. So we discussed about this authorities, how to maintain the authorities, and based on the authorities, how we can allow certain routes to be accessible by some user. Spring security will manage very easily. Just you need to mention that which type of role you are assigning for a particular route, for a particular user. Okay, I hope everyone is comfortable with this example. Please confirm. Hello. Today, there won't be any assignment because assignment submissions are very less. I request everyone to please submit your assignments since it is in GitHub. So don't afraid कि सारे assignment complete होने के बाद ही हम submit करेंगे. आप gradually भी submit कर सकते हो. आधा कम करने के बाद फिर जैसे complete हो पूरा फिर से आप उसे बाद में submit कर सकते हो. So based on your comment, you can provide the comment. These are partially completed, and then also you can submit that and upload that in your GitHub. Now, there is one small assignment I'm giving you in the live session. What you will do that, try it yourself. Ritik is saying side view. So Jakir, if you are there, please check out that and please fix this issue of the view. Zakir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Now, guys, is it okay? Okay, cool. So there is one small assignment I'm giving from my side. What you will do that, this customer, if you notice, I took that authorities and is a one-to-many relationship. What you need to do, you will take this authority, but don't create this authority class as an entity. It will be a normal class, normal value class object. And take this entity list only, here this authority is as a list only. And don't use one-to-many, just use your element collection and use the join column as well. So that we know that here also we can have that multiple authorities we can pass without having this relationship. And try to run this example once again. फायदा क्या होगा उससे आपको कि आपको इस कंट्रोलर के अंदर ये एसोसिएशन जो हम कर रहे हैं सॉरी सर्विस के अंदर दिस थिंग यू डोंट रिक्वायर टू डू दैट associating each entity with another because there won't be a second entity, only customer entity
and in which you have the list of authorities. So you need not to do this association. Does it make sense? So at least you should try that yourself. So make the copy of this example and copy this example and create the separate example so that this example won't be any changes having any change, and try to modify that example yourself. Okay, since we are very much comfortable with the authorities based authorization, since let's see that here, role based authorization. Roles, as we discussed about that, is the coarse grain authority or permissions. So you can assign the roles, और ये role decide करेगा कि अभी क्या क्या authority है. So instead of assigning that individual authority कि ये authority आपके पास है कि आप view all customer, view single customer, view update a customer, or get a customer, get a particular product list. Assigning multiple authority to a particular user, try to assign the role. कि अगर ये admin है तो मतलब इसके सारे permission है. अगर ये clerk है तो इतने permission नहीं है, बाकी यही permission. So you can group the authorities in a role and assign the role to a particular user. And here we need to use has role and or has any role. But remember, Spring Security will maintain the role using this prefix role underscore. Now let's have this example with this role-based authority. I have created that the separate example, that is the Spring Security role app. And let me explore this. So remaining all those things is similar. What is the changes here? I'm just mentioning here. I won't have any authority class, separate class. क्योंकि इस बार हम authority use नहीं करें, हम role use करें. तो बस एक simple सा class है customer. और इसके अंदर role हमने कैसे mention किया हुआ है? Let me show you. So role is mentioned using a string role. इसी string के अंदर हम role mention करेंगे कि इसके पास क्या role होंगे. Right? And it's a single object. There is no P any list. Is a role only. किसका कौन सा role होगा? User का role होगा या admin का role होगा या क्या role होगा? That is the particular customer. ये कस्टमर की रोल क्या है? एडमिन है या यूजर है या फिर क्लर्क है? व्हाट इज द रोल ही इज हैविंग? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी हियर अदर डिटेल्स. सो there won't be any other kind of difficulties if you notice this customer. So controller, so here how I am passing these details to register a customer. So this is the name, email, password, address, and see here how I am passing this role. I am prefixing role underscore admin. आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ एडमिन भी ले सकते हो और ये प्रीफिक्सिंग आप अपने कंट्रोलर के अंदर कर सकते हो. What I mean, I will show one example. So by this way, I am taking the data, and I can take that other customer using role underscore user. तो हम दो कस्टमर को रजिस्टर करेंगे. राम will be the admin and Ramesh will be the user. Make sense? Please confirm. Cool. और यहाँ पे किसी एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने पासवर्ड इनकोडेड से सेट करके वैल्यू को पुट कर दिया. ओके, अगर हम चाहते हैं कि हम यूजर को शायद प्रॉब्लम हो, ये अंडरस्कोर भूल जाए या ऐसा कुछ हम चाहते हैं, तो हम कहते हैं आप यूजर सिर्फ आप रोल दे दो. आप लेट्स से दैट ही इज पासिंग एडमिन और यूजर. तो ये लॉजिक अब हम कहाँ लिख सकते हैं? अपने यहाँ पे. मतलब जैसे ये पासवर्ड को हमने सेट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कस्टमर डॉट सेट रोल customer dot get role dot to uppercase, right? और इसे हमें प्रीफिक्स किससे करना होगा? role underscore plus. Is it okay? So you have both options. This will be much more better option. You can do that one. Let me put that in a comment. But since in my notes it is already mentioned, so I'm going to just revert it back. It should be role underscore admin. और दूसरा user हमारा role underscore user. Your wish. I just put that in a comment, so you can utilize like this as well and take that only role whatever you can do. अब user के पास flexibility होगी कि वो admin दे सकता है, user दे सकता है, whatever. Let me just this thing is written there in your notes. So what I'm going to do that I'm making the normal one. So you have the both option. You can take out this example also. And अगला customer को हमें add करना होगा user. That will be much more better.
Okay. So that's it. Nothing great here. All those things is as it is. Now let me show you the next thing that is here. Customer service, user retail service. This is the important one. कि हम इस बार रोल को हम कैसे granted authority में सेव कर रहे हैं. So you can notice here how I have just used that. I got the customer by load customer from the repository, and here I created the list of granted authorities. और यहाँ पे आप देखो हमने कैसे सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी को एक्सेस किया है. सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट बनाया है यूजिंग कस्टमर डॉट गेट रोल, जो भी उसका रोल जो भी होगा, और इसको हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया है लाइक दिस. एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म. पिछली बार क्या था, वहां पे लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज थी. लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज में हमने सारे अथॉरिटीज को ऐड किया. यहाँ पे एक ही रोल है, तो इस रोल को हमने बस एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, एंड दैट रोल आई हैव एडेड इन दिस लिस्ट. सो वेदर चाहे आपके पास अथॉरिटी हो या रोल हो, दोनों मेंशन होते हैं ग्रांटेड अथॉरिटी की तरफ से. लिस्ट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी इट इज मेंटेन by using list of granted authority and simple granted authority. I hope you got the point. Please confirm. Now let's see that the next one, that is our configuration. Remaining all classes are same. Just now see that app configuration. Here's the interesting thing. This time what I did, same thing is there, but here I have just used has role, has any role. मतलब वही चीजें हैं यहाँ पे भी. मतलब राम के पास राम एडमिन है, तो क्या वही दोनों को कॉल कर सकता है? हाँ. मतलब अगर हम सारे कस्टमर के डिटेल देखना चाहें तो कौन को देख सकता है? एडमिन. तो क्या राम एडमिन है? यस, राम इज द एडमिन, ही कैन एक्सेस. हेलो को एक्सेस करना है तो राम एक्सेस कर सकता है? यस, ही इज द एडमिन, ही कैन एक्सेस. अब बात करते हैं एक कस्टमर की डिटेल को एक्सेस करना. क्या राम एक्सेस कर सकता है उसे? बिल्कुल, क्योंकि एडमिन है राम, राम के पास ये अथॉरिटी रोल है. ओके. और क्या यूजर इसे एक्सेस कर सकता है? हाँ, वो भी कर सकता है. लेकिन इन दोनों को क्या रमेश जो कि यूजर है क्या एक्सेस कर सकता है? Can Ramesh access this two APIs? No, because to access these endpoints, the user must have the user role. And user role, since what? Sorry, admin role. And since Ramesh don't have the admin role, Ramesh is having only user role, so he cannot access these APIs. That's it. This is the only difference you need to use. Has role instead of has authority. Here has any role instead of using has any authority. So how to give different method in request matcher? This is the way. Directly, if you are just directly give that any hello, any other things, this is the way. अगर आप मेथड के HTTP मेथड के साथ देना चाहते हो, then this is the way you can use that get post like this. Got the point? Please confirm. So let's try to test this method as this example as well. So let me just clean the schema because this table won't be applicable because यहाँ पे हमारे पास authority की भी table है, तो हम इस बार वो नहीं चाहिए हमें. So I'm just dropping this database, creating this database. Cool. Let me run this example once again and check out that this is working or not. So application got started. Let me register one customer. So first of all, go to the post and it should be the customers. I don't need any kind of username and password. Go to the body and remove this and paste this controller. This one. Like this. And keep the request. So here it is role underscore admin got added, right? Now let's try to add another user. So it should be the Ramesh. Ramesh@gmail.com. Let me change this address as, and here which is the role is user.
user or clerk or manager, whatever your wish you can do. Accordingly, you need to configure. And the request, this user also got added. Just try to log in with Ramesh. So get should be sign in. And here go to the authorization, basic auth. This should be Ramesh @gmail.com and give the request. Ramesh logged in successfully. Now, Ramesh try to call the API to get only one customer detail. So I'm calling customers /ram@gmail.com. So whether he will be able to access this API or not, give me the answer. क्या रमेश कॉल कर सकता है इसे? Yes, he can call this. So he will be able to access this detail. लेकिन अगर वो hello को कॉल करना चाहे, say that hello. No, he is not allowed to call this endpoint. So 403. If you try to call all customer details, then also he won't be allowed to call this. Cool. Now let's try to do the sign in by using Ram. This should be the ram@gmail.com. Ram is logged in. Now, if I try to call all the customer details, yes, he is allowed to call this, all of them, because he is authorized to call this. So here, all the customer details. If you try to call hello, yes, he is also able to call this. In fact, he's also able to call that single customer details also. I hope you got the point here. Please confirm. With this, we have seen that what is the difference between role-based and authority-based authorization. Now, the next thing. So this is the example. It is also, I will share all the example on your LMS. This is the same thing it is mentioned. I have copy pasted only there. Here, I have just used role_admin. So in that case, in your controller, you need not do any modification. But in our example, we took anything. Now user can pass normal admin, capital admin, smaller admin, no problem. Our example will set up the proper admin with the role prefix. Okay, now the interesting thing here, that is Spring Security using JWT CORS filter. So we're going to discuss one by one all those things. Choosing role, how will we add more than one authority? No, actually, more than one authority is not like that. Based on the authority, you can take the list of role also, not a problem. But the thing is that कि इस user के पास ये सारी roles है. इसके पास manager का भी role है, इसके पास clerk का भी role है, इसके पास admin का भी role है. In that case, you can take list of role also, not a problem. Similar kind of way of how we have used the authority. Here you can also use the element collection. But the thing is कि हम एक या दो role ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं. और उसी रोल में हम कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर एडमिन है, दैट मींस ही इज व्हाट, ही इज हैविंग ऑल द अथॉरिटी. ही कैन डिलीट अ रिकॉर्ड, ही कैन update a record, he can modify the record, he can get the record, all this thing. But if he is not an admin, if he is an employee, then he will have what? The role like that. What is that? He will have only update the record or get the record, get all the record, but he can't do the delete record. He can't do that what delete operation, like deleting any record, because he is not an admin. अगर आपको delete करना है तो आप admin से contact कीजिए. Does it make sense? Please confirm. Now one more thing, how to design the front end of this type of application. So in this type of application, based on the username already, just जैसे हम register कर रहे हैं, वहां से ही हमें पता चल जाएगा कि username क्या है, उसकी role क्या है, उसकी authority क्या है. क्योंकि जो यूजर लॉगिन कर रहा है, वो लॉगिन करते वक्त ही हम वहां पे असाइन हो जाएगा कि वो एडमिन है या यूजर है या सुपर यूजर है या क्लर्क है या एम्प्लॉय है. और अगली बार जो साइन इन करेगा तो उसकी अथॉरिटी उसको मालूम चल जाएगी हमारे सिक्योरिटी को कि दिस पर्सन गॉट लॉग्ड इन, इसकी अथॉरिटी क्या क्या है और इसे कौन कौन सा राउट एक्सेसिबल है. इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म. हेलो. गुड. Now the next important thing is what this is the CORS. CORS basically is also used to say cross origin resource sharing.
So इसका मतलब होता क्या है? Basically, you can go through this notes, you can understand this cross basically is a combination of three things. Different schemes here, that is HTTP and HTTPS protocol, different domain and different port. जब भी ये तीनों इन तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं origin. All the combination of these three things is called origin. Cause is not a security issue attack. Basically ये कोई attack नहीं है, कोई theft नहीं है और threat नहीं है. It is a default protection provided by the browser to stop sharing the data communication between different origins. Here, different origins means URL being accessed from the location that the JavaScript is running from or having. That means CORS problem will occur only whenever your backend application is being accessed by the any front-end application, any JavaScript application. It will not give any kind of problem if you are calling this one through any API. किसी दूसरे बैकएंड से कॉल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, there won't be any CORS issue. But CORS issue will come only when you are trying to call your API through your JavaScript application. Those people, they have tried to connect the front end part also with the Spring Boot. By watching my video, you might have noticed I have used one CORS origin. Did you remember that? On a controller class, I use the CORS origin is equal to star. यस हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई फ्रंट एंड से हम बैक एंड को कनेक्ट करना चाहे ना, अगर फ्रंट एंड इन द सेंस जावास्क्रिप्ट वाला फ्रंट एंड, चाहे वो एंगुलर हो या फिर रिएक्ट हो, तो इन दैट केस व्हाट यूज्ड टू हैपन, योर ब्राउजर इज हैविंग अ सिक्योरिटी लेयर. अगर वो एप्लीकेशन किसी सर्वर पे रन कर रहा है, सो इट वोंट बी अलाउड टू एक्सेस दोस पर्टिकुलर रिसोर्स. सो दैट मींस द कम्युनिकेशन विल बी स्टॉप देयर कि है आपका एप्लीकेशन किसी दूसरी सर्वर पे रन कर रहा है. So different port या different domain से अगर आपका application है, it won't be allowed to call by the browser. That is called what? So this three composition is called what? CORS. That means origin. Cross origin resource sharing. So here different origins means the URL being accessed from what? Different location that the JavaScript running from of having जो दूसरा किसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल से यूज हो रहा है या HTTP से यूज हो रहा है, लेकिन दूसरे डोमेन से हो या फिर किसी और पोर्ट से हमारा एक्सेस हो जिस पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है. If two different origin trying to communicate each other, browser will stop them by the browser. By default, browser will stop them because the security feature provided by the modern browser. So सारे ब्राउजर ये फीचर प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली वो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजते हैं. They used to send a pre-flight request to our application. कि है हम दूसरे डोमेन से आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका एप्लीकेशन इसके लिए कंफर्टेबल है, क्या उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपके एप्लीकेशन में कर रखा है. अगर है तभी वो दूसरा रियल रिक्वेस्ट हम भेजते हैं. इट विल गिव अ प्रॉपर रिक्वेस्ट. बट अगर ब्राउजर हमारा बैकएंड एप्लीकेशन उसके लिए रेडी नहीं है, इट इज नॉट अलाउइंग, सो आवर ब्राउजर वोंट फायर अ रियल रिक्वेस्ट. सो हियर इज दैट एग्जांपल हियर. So whenever any browser, that means any UI app running on a different domain, जैसे आपका Angular application 4200 पे रन करता है या फिर किसी दूसरे पोर्ट पे आपके फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और ये बैकएंड से कम्युनिकेट करना चाहे, तो फर्स्ट बिफोर सेंडिंग द रियल रिक्वेस्ट इट विल सेंड अ व्हाट, अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट. Hey backend application, are you configured? Are you okay with that? I'm going to send you one request from my JavaScript. If backend application is having proper configuration, he will allow. Otherwise, it will block that, and you are going to get what? CORS origin error. The browser, hey browser, your backend application is not allowing your, because it is not configured the CORS origin. So please, you don't give the proper request or don't give the real request. So after CORS is enabled, then only your application will give the proper. That means it will fire the real request and get the response. That means communication will be happening. अब इसे फिक्स कैसे करते हैं? तो अगर आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट यूज, इफ यू हैव क्रिएटेड अ नॉर्मल रेस्ट एपीआई, तो आप एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि हम कंट्रोलर क्लास पे जाएं और बाय डिफॉल्ट हम करें या ना करें स्प्रिंग सिक्योरिटी. इट इज CORS इज नॉट रिलेटेड टू द स्प्रिंग सिक्योरिटी. बाय द वे, हम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करें या ना करें, सपोज हमने एक कंट्रोलर बना रखा है और इस एंड पॉइंट को हम जावास्क्रिप्ट से कॉल कर रहे हैं, तो ये कॉल पॉसिबल नहीं होगी. क्यों? बिकॉज ऑफ द CORS इशू, CORS origin site resource. That means शेयरिंग. इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारा ब्राउजर हमारे एप्लीकेशन को ये दूसरे पोर्ट पे रन कर रहा है, दूसरे सर्वर दूसरे डोमेन में रन हो रहा है, तो ब्राउजर वोंट बी अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स.
तो इसका टेम्पररी सॉल्यूशन है, यू कैन यूज हियर व्हाट ऑन एवरी कंट्रोलर यू कैन राइट दिस वन एनोटेशन कॉल्ड क्रॉस origin is equal to, and you can specify that front end, just let's say that हमारा angular run कर रहा है किसी 4200 पोर्ट पे, तो you can write like that http://localhost 4200। मतलब अब वो एप्लीकेशन जो इस पोर्ट पे इस लोकल सिस्टम पे रन कर रही है, दैट एप्लीकेशन इज अलाउड टू कॉल दिस एपीआई। उस पोर्ट पे इस डोमेन में कोई अगर एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का रन कर रहा है, उस एप्लीकेशन को अथॉरिटी मतलब अलाउड है ये हमारे एपीआई को कॉल करने की। एनी अदर एप्लीकेशन व्हिच इज रनिंग ऑन अ डिफरेंट पोर्ट्स, डिफरेंट एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, राइट? Now the next thing is that to configure each, let's say that हम सारे एप्लीकेशन को हमें अलाउड करना चाहते हैं, in that case you can use origin is equal to star। Now अब कोई भी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट वाला एक्सेस हो जाएगा, लेकिन it's a temporary solution। Why like this? Because with this what will happen, suppose that in your very big application you have and you have the multiple controller, you won't go to the every controller and repeat this annotation on all the controller. This is the first issue. Another issue, you can't release some certain headers and other details also to your front end application। मतलब कि हम बैकएंड से चाहते हैं कुछ हेडर भी हम एक्सपोज करें, कुछ नए हेडर को हम एक्सपोज कर दें अपने फ्रंट एंड हमारे जावा स्क्रिप्ट वाले एप्लीकेशन को, कुछ एक्स्ट्रा हेडर, तो आप वो नहीं कर सकते हो। यू नीड टू डू द प्रॉपर कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड if you have used a Spring security, you have the better way to manage that. So you don't need to do this, and don't use this course origin if you are using Spring security, it won't work. In that case, you need to configure this course configuration। So let me close this application, stop the server, and here is the example, Spring security role with course app। वही एप्लीकेशन है जो भी पिछले हमने डिस्कस किया था रोल वाला, लेकिन इसमें बस हमें कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव करना है। कैसे? जस्ट यू नीड टू सी दैट ऐप कॉन्फिग, and in your notes it is also mentioned that here it is a temporary solution, that means temporary solution for this JavaScript communication happen, which we discussed। But if you have the 100 controller, then it will be a tedious job to use all the controller, and we can centralize the configuration। This is the goal। तो पिछले एग्जांपल में हमने ऑथराइज रिक्वेस्ट से हमने शुरू किया था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक उसके पहले आपको HTTP के बाद एक course मेथड यूज करना है, course, and course is equal to course configuration source, and here you need to create that one object। Let me do that one from the beginning, new course configuration source। Here I have done this already, so let me just remove this all of them। तो पिछला वाला एग्जांपल कुछ इस तरीके से था हमारा, course configuration enable नहीं किया। अभी क्या करना है, we need to just push this to the next one, and here http://course। So there are two courses there, we need to use the second one using customizer, and here course goes to the lambda expression, and here we should not be like that। Like this। So here is that all the details you need to write। So this course will take what? Another object। That means what, here you need to just define that course configuration source। So course configuration source, and it will take one object। So you need to pass this object। So object का नाम क्या है? New course configuration source। This is an interface, you need to use the anonymous inner class for this one, new course configuration source, new course configuration source। This is an interface। Interface का जब हम class बनाते हैं तो anonymous inner class, I hope you know that। So you need to just click the enter, and you need to put the semicolon over here। Cool। And you need to write the logic in this course configuration। So in this request, you need to, based on that, you need to do the configuration and need to return one course configuration object। So how I did that,
So here is the new course configuration HTTP request. You need to create this object and return this. So here you need to create this course configuration object. अब इस course configuration object के हम इससे हम इन सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. क्या क्या चीजें हैं बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके. Allowed origin pattern, collections dot singleton list. दिस वन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि कौन से डोमेन से हम उसे अलाउड कर रहे हैं, किस डोमेन से हम अलाउ कर रहे हैं. जस्ट लाइक दैट http://4200 आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो भी सर्वर से आप एक्सेस करना चाहते हो यू कैन पास. आई एम सिंपली गिविंग स्टार. दैट मींस किसी भी ओरिजिन से it should be allowed, it will be accessible. Collections dot singleton list, you know that what is the meaning of this. Okay, next set allowed methods. अब ये मेथड हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट से कौन कौन सा मेथड कॉल हो. आप चाहो तो यहाँ पे वो सारे मेथड मेंशन कर सकते हो कुछ इस तरीके से. जैसे सिंगलटन लिस्ट यू कैन मेंशन गेट कॉमा लाइक दिस कि हम कौन कौन से मेथड को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करवा रहे हैं. दैट मेथड आई वांट दैट कि ऑल मेथड शुड बी एक्सेसिबल. इस गेट ही नहीं सारे मेथड को हम जावास्क्रिप्ट से हम अलाउड करवा रहे हैं. सो यू कैन मेंशन allowed credential. That means what your browser is okay with sharing the credentials, username, password. I'm comfortable with that कि अगर कोई JavaScript वाला password वगैरह share कर रहा है, so we can allow that the password also from my JavaScript application. Headers, that means yes, I'm allowing that any JavaScript people can send. That means that domain application can pass any kind of header also to my application. If you specify that which type of header you are specifying explicitly, कि बस हमें यही header चाहिए, then also you can mention this list. Otherwise, star means all type of header he can pass. This is the expose header कि हम backend से कुछ नए header को हम expose करना चाहते हैं कि हम backend से जब हम response भेजे तो ये header हमारा front end side पे जाए. JavaScript में ये header हमारा चला जाए और वो Angular या फिर React वाले application इस header से उसकी value को निकाले. ये तब जरूरत पड़ती है जब हम CSRF टोकन भेजते हैं या फिर हम JWT टोकन वगैरह भेजते हैं तो ऑथराइजेशन हेडर से ही हम एक्सपोज करते हैं. अगर आपने ये मेंशन नहीं किया ऑथराइजेशन मतलब बैकएंड के नॉर्मल पोस्टमैन पे काम करेगा, आपके किसी बैकएंड एप्लीकेशन में वर्क करेगा, लेकिन कोई अगर एंगुलर और रिएक्ट वाला बंदा अगर आपको कॉल करे तो JWT टोकन उसको इस हेडर में या कॉर्स वाला CSRF टोकन उसे नहीं मिल पाएगा. He won't be able to get that this authorization type of header. So in order to expose that this authorization header to our front end JavaScript, we need to enable. So these are type of configuration you can do that. You can go to this one CSCFG, which is the course configuration object, and you can see that which type of other details are also there. Age set max age also you can mention. Duration कि कितने देर तक ये configuration active रहे. After that, this duration should be what destroyed. So you can specify lots of things with this. I'm not setting any kind of date. That means it is the unlimited time. This configuration will be there. And that's it. This configuration, any kind of front-end application will be able to access this. Make sense? Now, if you are doing that, if you're trying to create the front end of your application, which is using Spring Security, this configuration will be mandatory. Without that, if you just think like that कि controller पे हमने बस लगा दिया course origin, it won't work. You have to specify this configuration, then only your front end, your JavaScript, Fetch API, Angular, React will be able to communicate with your backend. Am I clear? Please confirm. Cool. Since I have not created the front end, but this is the configuration, you can try with your front end JavaScript as well. Nothing great here. Now, the next important thing is that this is that already it is mentioned there, the same thing is mentioned over there.
and the details is also it is mentioned. We can allow all the origins, all the method like get, post, and it is fine with the setting the credential. Here you can set the, that means up to how many time that browser will cache these details for 1 hour, 2 hour. After that, it won't work. So you can specify those details. और ये कैसे काम करता है, that is also mentioned there. You can read this. Okay. Syntax भी भूलना है फिर पक्का. Okay, Nitish is saying that sir, it will be very difficult to remember this configuration details and this syntax. How to remember that? Yes, actually, you are correct, Nitish. Basically, nobody will remember this kind of all the syntax. But if you have the idea, if you have this application, if you have these notes, you can refer, or from the previous application, you can take this configuration. What were the details you want to allow here? Am I clear? बस ये course configuration, बाकी ये सारी चीजें तो आपको याद हो जाएंगी कि किस चीज को हम अलाउ कर रहे हैं, किसे परमिट कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं. Cool. Now the next important thing is that is CSRF. CSRF का नाम आप लोगों ने सुना है? CSRF अटैक क्या होता है? What do you mean by CSRF attack? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी. इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिखाया था पिछले एग्जांपल में कि हमने ब्राउजर से लॉगिन किया था और उसी लॉगिन के जे सेशन आईडी को हमने कॉपी करके पोस्टमैन से रिक्वेस्ट किया था एंड it was able to give the request without using proper credential. I was able to access the request. This is a similar kind of problem will be there. That is called CSRF attack. Just read this note. So a typical CSRF or XSRF, इसे हम XSRF भी कहते हैं, CSRF भी कहते हैं, attack aims to perform an operation on a web page or web application or application on behalf of user without their explicit consent. मतलब वो हमारे बिना अनुमति के, मतलब बिना हमें बोले वो कोई दूसरा हमारा application, someone else is using that or performing some operation. In general, it does not directly steal our user identity. It will not steal our what username and password or guessing that username and password, but it exploits the user to carry out an action without their will. मतलब वो यूजर से मतलब हमसे कुछ ऐसा काम करवा लेते हैं जो विदाउट हमारे मर्जी के हो, that they will be able to do that. It is one of the most severe vulnerability which can be exploited in various ways, from a changing user information without his knowledge to gain a full access or partial access, you can say, of the user account. छोटा सा example है, there is one example is given. There is a one Udemy video where this example is very well explained. So that is a screenshot, we took that from there. So let's see that CSRF attack ही कैसे करते हैं. For example, आपने browser open किया and you are watching that your Netflix का website आपने open कर ली and you have given the credential and now you are watching that here Netflix content, right? So here the Netflix user log into the netflix.com and the backend server of Netflix will provide a cookie which will store in the browser with the domain with against the domain of Netflix. जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे, वी नो दैट कि आपका नेटफ्लिक्स का सर्वर उसे ऑथेंटिकेट करेगा और हमारे पास जो कंटेंट आएगा, वी आर द लॉगिन कैंडिडेट, लॉगिन पर्सन, और हमारे ब्राउजर में उस नेटफ्लिक्स की जे सेशन आईडी वाली कुकी स्टोर हो जाएगी. एम आई करेक्ट? प्लीज कंफर्म. और ये जे सेशन आईडी वाली कुकी हर बार ट्रैवल होगी, क्योंकि अगली बार जब भी हम कोई रिक्वेस्ट पास करेंगे तो हमसे फिर से दोबारा हमसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा. अब ये CSRF अटैक कैसे होता है, लिसन केयरफुली. अब अगर वही यूजर, ये ब्राउजर की स्टोर हो गई है जेसेशन आईडी, इस ब्राउजर के लिए एप्लीकेबल है. ब्राउजर का मतलब ये नहीं कि इसी टैब, इन फैक्ट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस टैब आल्सो, नेक्स्ट टैब आल्सो. नाउ अगर हमने अगले टैब में कोई साइट, हमने कोई दूसरी साइट, थर्ड पार्टी साइट जस्ट लाइक दैट evil.com ओपन कर ली. evil.com को पता है, या फिर एनी हाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव ओपन द नेटफ्लिक्स एंड एनी अदर वेबसाइट, what they can do, they can simply send a particular promo code. Hey, please click on this link, you will get the iPhone on 90% off. कुछ भी ऐसा कुछ, मतलब लोगों को फंसाने के लिए कुछ ऐसा सा प्रोमो, फेक प्रोमो, some link they will send. आप क्या करोगे, सेकंड पेज आपने ओपन कर रखा है, you will click on that link. उस लिंक के पीछे क्या छुपा होगा, in behind that particular link they will pass you what, they will forge you,
दे विल पास यू ऑन जावास्क्रिप्ट कोड, और वो कोड क्या होगा, नेटफ्लिक्स पे आपके पासवर्ड को बदलना या फिर आपकी ईमेल को बदलने का कुछ रिक्वेस्ट होगा, एंड दैट evil.com will going to use your same JSession ID. अब इसी ब्राउजर से वो सेशन आईडी से एक रिक्वेस्ट जाएगी नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स को पता नहीं चलेगा कि ये पासवर्ड चेंज करने का रिक्वेस्ट किसने भेजा है, आपने भेजा है या फिर evil.com ने भेज रखा है। अब तो बस यहाँ पे 90% के लालच में क्लिक कर रहे हो बटन, लेकिन होगा क्या, बिहाइंड द सीन इट विल सेंड दिस जावास्क्रिप्ट कोड। वो जावास्क्रिप्ट कोड क्या होगा कि नेटफ्लिक्स पे जाएगा, चेंज ईमेल, and method will be post whatever that, and this input type is hidden email, and this is your evil.com का username, and then document.getElementId f.submit, ये हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा यूजिंग पोस्ट। और जब ये रिक्वेस्ट जाएगी सेम ब्राउजर से, इसका मतलब कि क्या है, जे सेशन आईडी भी होती हुई जाएगी, यस और नो, प्लीज कंफर्म। जे सेशन आईडी इसी ब्राउजर से जाएगी नेटफ्लिक्स पे, हियर इज दैट नेटफ्लिक्स पे यूआरएल पे जा रही है। अब नेटफ्लिक्स को पता चलेगा कि इट इज यू ओनली हु हैज गिवन द रिक्वेस्ट, बिकॉज योर सेशन आईडी इज मैथ एंड यू आर अलाउड टू कॉल दिस एपीआई, so this API will be called and your username got tampered or it will be changed. Got the clarity? How this evil.com will steal your session ID and on the behalf of you, it will going to perform some malicious activity without your consent. Okay, so this is the things how exactly it will work. But in real time, बहुत सारे ट्रिक है कि इसे हम स्टॉप कर सकते हैं। So what is there? बाय डिफॉल्ट इसी अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ही आप CSRF अप स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करते हो, तो उसका प्रोटेक्शन ऑलरेडी है इन स्प्रिंग सिक्योरिटी। सो बेसिकली इन योर स्प्रिंग सिक्योरिटी इज द बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन इज देयर, दैट मींस इट विल नॉट अलाउ द पोस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट। आप गेट तो कर सकते हो, राइट, बट यू डोंट डू दैट व्हाट पोस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट to execute some data. If you want to do that, you are going to get the 403 error code. We have seen already कि हम post और put नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हमने एक temporary solution find out किया था। क्या, we just disable the CSRF like this, until now we are doing like this only, CSRF dot disable, which is not at all recommended। CSRF को आप disable कर दोगे तो सबसे बड़ी problem क्या होगी, जो अभी हमने बात की थी, कि आपके बिहाफ में कोई भी आपकी सेशन आईडी को चुरा के वहां से पोस्ट या फिर पुट रिक्वेस्ट को ट्राई कर सकता है, and they can fire any request to your website, and without your consent, on the behalf of you, he can perform any other operation. Am I clear till this problem? Please confirm. Okay, so obviously this is not a proper recommended approach or recommended solution. So इसका proper solution क्या होगा? So proper solution है कुछ हमारे पास। तो सबसे simple तरीका क्या है, I'm going to show with example। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी से हम एक टोकन पास करेंगे। मतलब क्या, कि जैसे यूजर ने नेटफ्लिक्स पे लॉग इन किया, अब ये नेटफ्लिक्स वाला क्या करेगा, इट विल गोइंग टू गिव द जे सेशन आईडी टू द यूजर ब्राउजर, लेकिन जे सेशन आईडी के साथ साथ ये एक CSRF टोकन भी यूजर को भेजेगा एज ए कुकी। तो अब यूजर के पास दो कुकी मिलेंगी, एक जे सेशन आईडी और एक CSRF कुकी, ठीक है। अब अगली बार ये क्या करेगा, यूजर ने evil.com की वेबसाइट ओपन की एंड ही इज ट्राइंग टू क्लिक ऑन दिस malicious link, then this both cookie will go to this server, right, and this time our Netflix will identify कि ये आपका रिक्वेस्ट नहीं है, ये किसी और ने भेज रखा है, it will be caught and it will give you 403 error। लेकिन अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर दोनों कुकी यहाँ पे जा रही है, तो फिर इसी ब्राउजर से होते हुए जाएंगी, तो ये नेटफ्लिक्स वाला, ये evil.com वाला भी जब क्लिक करेगा, रिक्वेस्ट हमारा देगा, तो वहां पे भी दोनों उस कुकीज, CSRF टोकन वाली कुकी और जे सेशन आईडी वाली कुकी वो भी जाएंगी। तो फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा नेटफ्लिक्स वाला कि ये यूजर से आ रहा है या evil.com से आ रहा है। सो इन दैट केस एक छोटा सा ट्रिक बैकएंड एप्लीकेशन वाले करते हैं क्या, ये कहते हैं कि ठीक है, इस बार भी, पिछली बार हम एक टोकन भेज रहे थे, तो जब ये आप मेलिशियस वेबसाइट पे क्लिक करते थे तो ये भी वो जे सेशन आईडी यहाँ से होते हुए हमारे पास आ रही थी, राइट। इस बार दो हम टोकन कुकी भेज रहे हैं, एक जे सेशन आईडी, एक CSRF टोकन। तो क्योंकि वो दोनों कुकीज के थ्रू ही जा रही हैं,
तो इस बार भी दोनों कुकीज हमारे पास आएगी। फिर ये हमारा वेबसाइट कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये दोनों कुकी आपके पास से आ रहे हैं या इबिल वाले के पास से आ रहे हैं? सो इन दैट केस netflix.com इनके साथ और आपके जो फ्रंट एंड वाला यूआई एप्लीकेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये कहते हैं कि मैं जो ये आपको CSRF का जो टोकन भेज रहा हूँ कुकीज के थ्रू, आप एक काम करो, इस कुकी को हमें रिवर्ट बैक करो अपने हेडर के साथ। कुकी के साथ तो आएगा ही आएगा दो दो टोकन, लेकिन आप इस कुकी को आप अपने हेडर में इंक्लूड करके भेजो, तभी हम आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप ये लेजिटिमेट यूजर। तो चूंकि इसका फ्रंट एंड इसी का बैक एंड है, it can take this one, it can fire the request, it can tamper that header, get the cookies, put that in a header and then send that header to the real website. वो काम ये evil.com नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अगर वो हेडर के वैल्यू को, कुकी के वैल्यू को हेडर में कन्वर्ट करके अपना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना होगा, तो ये किसी अपने दूसरे डोमेन से करेगा, ना कि आपके वाले डोमेन से करेगा। आपके वाले डोमेन इन द सेंस कि जैसे हर कुकी को पता होता है कि किस डोमेन से वो बिलोंग करता है, राइट? और वो उसी साइट पे ही जाती है वो कुकी। मतलब अगर आपके फेसबुक के अगर कुकीज आपके ब्राउजर में स्टोर है, तो वो फेसबुक के कुकी किसी दूसरे वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, वो फेसबुक जब आप साइट ओपन करोगे तो उसी साइट पे वो ट्रैवल होते हुए जाएंगे। तो evil.com वाला वो काम नहीं कर सकता है कि उस कुकी को ले और अपने हेडर में इम्बेड करके फिर उस कुकी को भेजे। Am I clear? With this one, our Netflix server will identify. I'm telling you once again. This time, user will give the request, and Netflix server will issue two cookies. One is a JSession ID cookie, one is a CSRF token cookie. अब अगली रिक्वेस्ट के लिए जब ये कोई दूसरा रिक्वेस्ट देगा, तो इसे दोनों टोकन भेजने पड़ेंगे। तो वो काम तो हमारा evil.com भी कर देगा, क्योंकि वो सेशन में पड़े हुए हैं, दोनों कुकीज हैं, दोनों कुकीज evil.com भी रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके साथ वो भी चला जाएगा। लेकिन अब ये लेजिटिमेट यूजर का है या evil.com का रिक्वेस्ट है, कैसे पता चलेगा? बिकॉज legitimate user will send this request and that cookie should be a part of header also. तो कुकी के साथ साथ उसे हेडर में भी भेजना पड़ेगा वो CSRF टोकन, जिससे हमारा नेटफ्लिक्स यूजर पता कर पाएगा सर्वर कि ओके, यहाँ से ये जो ब्राउजर से आ रहा है तो ये कुकी तो आ ही रही है, लेकिन अब हम इसका हेडर भी चेक कर लेते हैं कि हेडर में भी वो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हेडर में डेटा आ रहा है मतलब ये हमारा रिक्वेस्ट है, और अगर हेडर में नहीं आ रहा है, सिर्फ दो कुकी आ रही है, मतलब कोई somebody has tampered this, he has to stop. Got the clarity? Please confirm. Now let's see that the proper implementation, then you will get that proper clarity. So I have created one other example. Let me just close all of them. Spring security role with CSRF. Same वही एग्जाम्पल है, आप जिसमें कुछ चेंजेस है, पहले हम नोट्स पे देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस है यहाँ पे। So Netflix user login and server will send CSRF token along with the cookie for this particular user session, and browser will get two cookies: authentication related cookies, that is JSession ID, and CSRF related cookie. Now Netflix will open another tab in the browser, and evil.com also will send the request, but this time our Netflix server will accept the CSRF token from the body and the body or header or payload, whatever based on the contract with the front end कि आप हमें CSRF token कैसे भेजोगे, बॉडी से भेजोगे या फिर हेडर से भेजोगे. Don't worry, we will see one example. Now there's one other option is there, like that we can ignore certain CSRF protection. फॉर एग्जाम्पल आपके एप्लीकेशन में कुछ ऐसे भी पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट हो सकते हैं जिनको अगर कोई यूजर अगर एक्टिवेट करे, कोई अगर उससे रिक्वेस्ट भेजे, तो इट विल नॉट हार्म यू. In fact, it is a post. Some data can be posted. Let's say that some feedback, some messages, somebody is posting, some contact information, somebody posting the notice. So it won't harm your application. In fact, it is a post and put request. उस केस में क्या इसके लिए CSRF प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है. So in that case, what we can do, we can ignore this type of put and post request. Let me show an example. So create two post endpoints or
post and put. Here some endpoints are there. Not two, basically these are three. Create the following endpoints inside the our previous controller class. तो हमने क्या किया है कि इस एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे अपने कस्टमर कंट्रोलर में I have added this three endpoint. पहला endpoint है contact. It is a post mapping and simply is returning string. Not harmful post operation. Notice, not harmful put operation. It is a put mapping. This is another post mapping that is a write as, but it is a harmful post operation. It is a harmful, इसे हमें access नहीं करने देना. इसके अलावा पोस्ट ऑप्शन हमारे पास बस एक ही मेथड है पुराने कंट्रोलर में, ये इसे तो एनी हाउ हम इसे व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो हम रोकेंगे ही नहीं और ये भी हमारा क्या होगा, व्हाइट लिस्ट होगा. दैट मीन्स इट शुड आल्सो बी व्हाइट लिस्टेड. सो व्हाट आई नीड टू डू हियर, this post, if somebody will call this one after authentication, it will not harm our application. कुछ ऐसे भी हमारे पास पोस्ट और पुट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है. तो उनको इग्नोर करने के लिए क्या करते हैं हम, so let's see that what I have done. So to tell that Spring Security that some public APIs do not apply CSRF protection by default, don't apply that. ये कुछ harmful अब हमारे पास है, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, we need to tell. पहले हम csrf.disable कर रहे थे, अभी करना होगा हमें csrf.ignoring request matches, notices, contact and customer, कि आप इन सबको इग्नोर कर दो. आप डिसेबल मत करो, इसे इग्नोर कर दो कि ये भी कोई हार्मफुल नहीं है, यूजर हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ. और कॉन्टेक्ट और नोटिस ये भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन राइट अस हार्मफुल है, तो आप इसे इग्नोर मत करो. एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म. सो csrf डॉट डिसेबल, उसकी बदले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इग्नोरिंग रिक्वेस्ट मैचर, कि हम कहते हैं इसके लिए आप csrf प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है हमें, don't use that one because they are harmless. Customer तो anyhow he has to register, तो कोई भी register कर सकता है और इन दोनों को भी कोई भी call कर सकता है, तो don't disable that, just only ignore them. Till this point I hope it is clear. Please confirm. Good. Now let's see that this example. So let me just go to here and in a app configuration, let me just remove this one. This line as well. तो पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कुछ हमने ऐसा लिखा था कुछ इसके पहले वाले एग्जांपल में, दैट इज csrf डॉट डिसेबल लाइक दिस. बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आई एम पुटिंग दैट हियर, दैट इज ignoring request matches. Is it okay? Please confirm. Hello. Good. तो अभी क्या होगा, ये हमारे दोनों कॉल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ये राइट अस को कॉल करोगे, इट वोंट बी अलाउड टू कॉल, क्योंकि राइट ऑल को हमने यहाँ पे इग्नोरिंग के अंदर नहीं रखा है. लेट मी जस्ट रिवर्ट इट बैक द एंटायर डिटेल्स. ओके, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस वन एंड दिस लाइन? Just talk about that. Now, let's implement the proper CSRF token solution inside our application. इसके लिए हमें CSRF token generate करना पड़ेगा. मतलब दो चीजें, एक तो हमें CSRF related token को cookies के थ्रू भेजना पड़ेगा along with the JSON ID, और दूसरा जब क्लाइंट उसे हेडर के साथ भेजे तो उसे मैच करना पड़ेगा कि ये हेडर में हमारे cookies के साथ मैच कर रहा है या नहीं. So to tell the Spring Security framework to generate the CSRF token and send that token to my client application, we need to create this class object, CSRF token request attribute handler. This object we need to create, and this object request handler we need to configure inside our token handler. Before that, ignoring matches, we need to configure this object. Then after, what we need to do, we need to use this option, CSRF token repository.
और इसके अंदर एक क्लास क्या हमारे पास एक मेथड है, स्टैटिक मेथड, वी नीड टू यूज दिस. अब ये हमारा CSRF token repository and this class what it will do that. So this class handler basically what it will do, this class is responsible to resolve the CSRF cookie details. And this token class, this one is responsible to persist the CSRF token in a cookie named XSRF token and read it from the client application header XSRF token. मतलब कि इस कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है आपके हेडर के साथ साथ क्या करे, आपके JSON आईडी के साथ साथ एक और कुकी को भेजे इस नाम से, XSRF टोकन के नाम से. आपको करना क्या है कि इस टोकन वाले वैल्यू को निकालना है अपने क्लाइंट एप्लीकेशन में और रिक्वेस्ट, अगले रिक्वेस्ट के हेडर में, हेडर का नाम ये होना चाहिए और इसके वैल्यू को अपेंड करनी है. एंड दिस मेथड विल गोइंग टू मैच. अगली बार ये हमारा मैच भी कर लेगा, इट विल जनरेट द कुकी एज वेल. That's it. So only you need to define this 2 line of code. And using that, what it will do that, it will generate a cookie. And when the client will send the cookie with this header, it will match that XSRF token value as well. Make sense? Please confirm. Cool. Now, इस कॉन्फ़िगरेशन से टोकन तो बन जाएगा, टोकन भी मैच हो जाएंगी हमारी. So it token will be created, token will be matched. लेकिन ये टोकन हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे कैसे? टोकन we need to send through the cookies as well. We need to रिस्पॉन्स के साथ वो कुकी को हमें भेजना है, टोकन को. वो हम कैसे भेजेंगे? अपने UI एप्लीकेशन पे. For that we need to create one filter. हमें एक फिल्टर भेजना है. We need to create that. That filter name will be that any name, CSRF cookie filter or whatever. इस फिल्टर का काम क्या होगा कि टोकन जब बन जाएगा हमारा CSRF टोकन, तो जब रिस्पॉन्स जाएगी क्लाइंट के पास आफ्टर इनिशियल लॉगिन, the extra token will be appended and it will go to the response as well. Make sense? So for that one we need to create one filter. ये filter क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम आज या फिर कल हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन अभी फिल्टर का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. CSRF कुकी फिल्टर, इस फिल्टर के बारे में और डिटेल में और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, हमारे पास फिल्टर के लिए भी डेडिकेटेड टाइमिंग है, हम वहां पे पढ़ेंगे टुडे इटसेल्फ होपफुली, और maybe day after tomorrow we are going to discuss. So there is a one filter you need to create by extending once per request filter. ये once per request filter क्या है इसके बारे में और डिटेल हमें पढ़ना है. We are going to do that. इस फिल्टर के अंदर एक हमारे पास मेथड होता है, we need to override do filter internally, and which will have 3 parameters: HTTP subnet request, response, and filter chain. This filter chain what we need to do based on this request. पहले इस रिक्वेस्ट से हम CSRF टोकन को निकालेंगे कि अगर कोई टोकन आता है तो टोकन हमने निकाल ली, और उस टोकन के वैल्यू को what we need to do that, see here, उसके हेडर से वैल्यू हमने, अगर उसका हेडर का वैल्यू नल नहीं है, मतलब अगर हेडर में वैल्यू हमारे पास आ रही है, then we just set the header here, that is response.setHeader and get header name CSRF token. मतलब उस हेडर में जो हमारा वैल्यू आएगा, ऑथराइजेशन हेडर बेसिकली XSRF टोकन, उस वैल्यू में अगर कोई टोकन की वैल्यू आ रही है, दैट टोकन वैल्यू वी आर अपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स हेडर, एंड फिर इस फिल्टर को हम आगे की तरफ मूव कर देंगे बाय कॉलिंग दिस टू फिल्टर चेन. डोंट वरी अबाउट दिस, व्हाट इज दिस फिल्टर चेन एंड do filter, how exactly it is doing, what is that once per request, because right now after this topic we have to dedicatedly discuss about this filter. और फिल्टर को हम एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे कि फिल्टर होते क्या है, ये मेथड हमारा कैसे काम करता है, डू फिल्टर, और ये हमारा वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर होता क्या है. बट फॉर द टाइम भी आपको एक फिल्टर बनानी है, CSRF कुकी फिल्टर. इसका काम क्या है कि आपके कुकीज को ऐड करना आपके रिस्पॉन्स के साथ, हेडर के साथ. दैट्स इट. So on a response, your header will be set with the cookies. Let me run this example. You'll get to understand what is this cookie is doing. Let me do that. So this cookie you need to create, this filter you need to create. So what I did here in this application, I created one CSRF cookie filter class, and there I have done the same thing. After that, what we need to do, इस filter को हमें क्या करना होता है, अपने Spring filter chain के साथ configure करना पड़ता है. मतलब अगर आप यहाँ देखोगे, जहाँ पे ये हम फिल्टर चेन हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि हम इस, क्योंकि ये फिल्टर चेन बहुत सारे फिल्टर है, हमें मालूम है कि बहुत सारे फिल्टर होते हैं स्क्रीन सिक्योरिटी में,
हमें उसी सीरीज में कहीं इस फिल्टर को अटैच करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं कि किसके पहले किसके बाद में और किस जगह पे हम फिट करते हैं इसको को। For that one, I have done here. See that after CSRF, I just call one method add filter after basic authentication filter dot class. हम कह रहे हैं कि हमारे फिल्टर को आप ऐड कर दो कहाँ पे, आफ्टर दिस बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर। बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या है? यही वो फिल्टर है जो आपको यूजर नेम पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है और ऑथेंटिकेशन हमारा कंफर्म करता है। एक बार ऑथेंटिकेशन हमारा कंफर्म हो गया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप एक फिल्टर बनाओ और इस फिल्टर को ऐड कर दो। ये फिल्टर करेगा क्या? ये हमारे रिस्पॉन्स हेडर में हमारे कुकी को ऐड कर देगा, CSRF टोकन को ऐड कर देगा एज अ कुकी। एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म। सो यूजिंग दिस फिल्टर आफ्टर, इसी तरह हमारे पास फिल्टर बिफोर भी है, फिल्टर एट भी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो हम वहां से किसी अपने फिल्टर को अटैच कर सकते हैं इस फिल्टर चेन के अंदर, क्योंकि फिल्टर चेन में बहुत सारे फिल्टर हैं, हम उसमें ऐड कर रहे हैं अपने फिल्टर को। कहाँ पे? बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के ठीक बाद। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर का एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और जैसे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है तब इस फिल्टर को हमने ऐड कर दिया। ये फिल्टर करेगा क्या? ये हमारे रिक्वेस्ट के वैल्यू को निकालेगा और उसके टोकन से निकाल के वैल्यू को एक हेडर के अंदर हमारे वैल्यू को, रिस्पॉन्स को अटैच कर देगा, मतलब उस टोकन को अटैच कर देगा, and it will send back to the client. Let me show this example. You will understand this. So first, what I'm going to do that, let me just drop this database. And let's execute this application. ठीक है, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और अभी हमारे पास कुछ एपीआई है कंट्रोलर के अंदर। लेट्स चेक आउट दैट। सो लेट्स ट्राई टू कॉल दिस पोस्ट मैपिंग कॉन्टैक्ट। और आप यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग के अंदर देखो आप, तो कॉन्टैक्ट हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इसे हमने कोई भी अथॉरिटी या रोल भी हमने नहीं दे रखा है। सो let me check whether I have the role or not in my customer class. That is having, that will be. So इसके लिए हमने कोई भी रोल अटैच नहीं कर सकता है, मतलब इसकी कोई भी कॉल कर सकता है, that's fine. And if you see this here, permit all सिर्फ कस्टमर्स के लिए रिलेटेड है। And I'm saying that here ignoring request matcher, notice contact customers. ठीक है, अभी हम पहले कस्टमर को रजिस्टर करते हैं पहले। So let's try to register one customer. Here it is. And customer. In the body, in the post request, Ram 1234 admin. Let's try to register himself. Yeah, he got registered. Now let's change that one as a Ramesh. यूजर, तो ये पहले एप्लीकेशन की तरह ही काम करेगा, दोनों हमारे यूजर रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। विदाउट लॉगिन कैन आई कॉल दिस मेथड्स? प्लीज कंफर्म। अगर हम लॉगिन न करें तो क्या हम कॉन्टेक्ट या नोटिसेस को कॉल कर सकते हैं? प्लीज कंफर्म। लेट्स सी दैट आवर कॉन्फ़िगरेशन। आप ये कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ, क्या हम इसे कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कॉन्टेक्ट और नोटिसेस, कॉन्टेक्ट नोटिस, इनफैक्ट राइटर्स ऑल्सो, राइटर्स, ये तीनों को नहीं, हम कॉल नहीं कर सकते हैं विदाउट लॉगिन। क्यों? क्योंकि ये परमिट ऑल नहीं है। परमिट ऑल का मतलब होता है कि आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इग्नोरिंग रिक्वेस्ट मैचर। इसका मतलब हुआ कि आप अगर ऑथेंटिकेट हो अगर, तब भी क्या नहीं कर सकते हो आप इसे,
पोस्ट रिक्वेस्ट को आप कॉल नहीं कर सकते। CSRF डिसेबल हमने इसीलिए किया था पहले। अगर CSRF हम डिसेबल ना करें तो इंस्टेड इफ यू आर लॉग्ड इन, अगर आप लॉग्ड इन है तब भी आप पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट को कॉल नहीं कर सकते। एम आई करेक्ट? प्लीज कंफर्म। अगर हम CSRF को डिसेबल ना करें तो हम लॉगिन हमने कर भी लिया है, तो क्या हम पोस्ट रिक्वेस्ट या पुट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? तो इस बार हमने क्या किया है, CSRF को डिसेबल नहीं किया है, बल्कि हम कह रहे हैं कि आप इन्हें लॉगिन होने के बाद इन सबको आप इग्नोर कर दीजिए। इनफैक्ट ये पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट है, इन दोनों सबको आप इग्नोर कर दीजिए। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को ही बिना लॉगिन किए कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यही परमिट ऑल है। बाकी ये इग्नोर्ड है, मतलब क्या है कि लॉगिन करने के बाद इनको आप कॉल कर सकते हो। मेक सेंस? बिना CSRF प्रोटेक्शन। सो लेट्स डू दैट। सो पहले अगर हम चाहे कॉल करना विदाउट लॉग्ड इन, अगर हम इसे कॉल करना चाहे, लेट्स पोस्ट एंड आई एम कॉलिंग कॉन्टैक्ट। Right now if I'm trying to call that contact, so it is a post request but I won't be able to। customers को हमने कॉल कर लिया था, दो कस्टमर हमने रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि ये पोस्ट है लेकिन ये परमिट ऑल है। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्ट को करें, ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट है, इट इज ऑल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट एंड हियर नोटिस एंड कॉन्टेक्ट कस्टमर। तो कस्टमर तो हमने कॉल कर लिया था, कॉन्टेक्ट इसे कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये परमिट ऑल नहीं है। लेट्स सी हियर, it is unauthorized, you have to logged in। am I correct? In fact you cannot call this writers also, writers post request, you won't be able to call this unauthorized। अब पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। let's log in this, get sign in, go to the authorization header, basic auth, and let's say that with the RAM I am logged in, I'm going to log in। so RAM is logged in successfully। अब क्या हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, लेट मी ट्राई टू कॉल पोस्ट एंड कॉन्टैक्ट, क्या कॉल कर सकते हैं? yes or no? let's check out that ignoring request matcher, कॉन्टैक्ट हमारे पास इग्नोर्ड में है, हम लॉग्ड इन है, इनफैक्ट ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, वी आर एबल टू कॉल दिस, नॉट हार्मफुल पोस्ट ऑपरेशन। इसके लिए कोई CSRF प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर कर दो, काम आपका हो जाएगा। Now let's try to call the put operation। I have a put operation also there, that is a put notice। So let's try to call this one as well। So it will be put and notice। yes, I am also allowed to call this one। so not harmful put operation। लेकिन अभी हम पोस्ट कॉल कर रहे हैं और हम पास कर रहे हैं राइटर्स, क्या इसे हम कॉल कर सकते हैं? स्टिल आई एम लॉग्ड इन, आई एम लॉग्ड इन, लेकिन क्या ये सम राइटर्स पोस्ट मैपिंग है, ये इग्नोर्ड नहीं है। इफ यू सी दैट हियर in this app config, it is not in the ignored list। so now we cannot call this writers। let's see that even though I have logged in, I am giving the proper username and password, but it will show you unauthorized। you are not allowed to call this due to the CSRF protection, due to the CSRF protection। इसे कॉल करने का तरीका क्या है? since I have applied this logic here, that is this one, CSRF token repository with HTTP false only, and we have applied this filter as well। so now if you notice in my cookies section, I am getting two type of cookies, दो कुकी हमें रिस्पॉन्स में मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो जे सेशन आईडी की कुकी मिल रही है which is maintaining our session, there is another cookie is coming XSRF token, और उस कुकी का वैल्यू कुछ ये है, right? not only this, if you see the header, in the header you will see that, let's say that here it is, no, in the header you won't get that, basically you are going to get that in a cookie itself, that is here it is XSRF token। अब इस राइट अस को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप रिक्वेस्ट भी भेजोगे ना, तो इस कुकी पे देखो, आप यहाँ पे दो कुकीज जा रही हैं, जे सेशन आईडी XSRF टोकन, ये दो कुकीज होते हुए जा रही है हमारे पास। अब XSRF टोकन में वही टोकन का वैल्यू होगा जो हमें मिल रहा था। सो सेम जे सेशन आईडी विल एंड सेम XSRF टोकन इज ट्रैवलिंग। किस केस में? जब हम नोटिस को या फिर किसी और को कॉल कर रहे हैं।
लेकिन write us को हम अगर कॉल करें, write us since it is a CSRF vulnerable, now इसे कॉल करने का तरीका क्या होगा? We need to create in a request header, we need to pass this token as well. So I need to copy this first. I need to go to the headers and I need to create one header here. उस header का नाम होगा XSRF token. और उसकी वैल्यू क्या होगी? That is this token value. Copy and paste it. ये काम हमारा कौन नहीं कर सकता है? evil.com नहीं कर सकता है. कुकीज वाले वैल्यू को कुकी के रिक्वेस्ट के साथ तो भेज देगा, लेकिन उस कुकी के वैल्यू को निकालना, अपने प्रोग्राम में रीड करना, फिर उसे हेडर में, रिक्वेस्ट हेडर में इंबेड करना, किसी पोस्ट रिक्वेस्ट को फायर करने के लिए, ये सिर्फ हमारा उसी डोमेन का फ्रंट एंड कर सकता है या कोई बैकएंड एप्लीकेशन जो उसी डोमेन से रिलेटेड है. बट आवर अदर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन वोंट एबल टू डू दैट. लेट्स रन द प्रोग्राम, सी द आउटपुट. दिस टाइम I should be able to call this body here. It is a harmful post operation, right? And since I am passing one extra header XSRF token, जो कि हमारे कुकी के अंदर आ रही थी as an extra information, जो evil.com नहीं कर सकता. evil.com क्या करेगा? दो कुकीज आ रही है यहाँ पे, JSession XSRF, यही कुकी को वो रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा. लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? हम अपने बैकएंड एप्लीकेशन में इस कुकी के वैल्यू को रीड करेंगे और एक एक्स्ट्रा हेडर रिक्वेस्ट के साथ अटैच करेंगे XSRF टोकन, और उस वैल्यू को हम पेस्ट कर देंगे. बैकएंड एप्लीकेशन को मिलेगी क्या? ये दोनों कुकी तो मिलेगी, जो कि evil.com से भी मिल रहा है, हमसे भी मिलेगा. लेकिन वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये रिक्वेस्ट evil.com का आ रहा है या फिर लेजिटिमेट यूजर का आ रहा है? बेस्ड ऑन दिस हेडर वैल्यू हम चेक कर लेंगे कि इसके हेडर के साथ वही टोकन कुकीज की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है. आ रही है मतलब ये evil.com नहीं कर सकता, ये हमारा नॉर्मल यूजर है. अब ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ. आप टोकन को हेडर के फॉर्म में चाहते हो, या रिक्वेस्ट यूआरएल के फॉर्म में चाहते हो, या फिर बॉडी के पार्ट में चाहते हो. along with the body you need to send this token. It's up to your wish, but in most of the scenario people used to take that using headers. Am I clear? Please confirm. So by this way you can manage your XSRF protection. That means you need to send the token. अब ये token generate कैसे हो रहा है? XSRF token ये generate कौन कर रहा है? That token is generated by whom? That is here, it is your this statement. Request handler and this cookie repository. This cookies repository is responsible to generate the XSRF token, and in fact जब आप header से भेज रहे हो तो उसे match भी करने का काम इस token repository का है. That token repository will do. और आप जो हेडर से रिक्वेस्ट को भेज रहे हो, रिस्पांस हेडर में जब आप भेज वहां से आएगा हमारा, तो दैट वैल्यू विल बी टेकन केयर बाय whom? By your cookies filter. This cookie filter will going to check this request attribute is having this name CSRF token or not. If it is that CSRF token dot get header name not equal to, अगर इसमें मतलब हेडर में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, अगर नल नहीं है मतलब कोई वैल्यू आ रही है, तब हम उस हेडर के नेम से वैल्यू को निकालेंगे और अपने रिस्पांस के हेडर में एक्सप्लिसिटली पुट कर देंगे. This is the purpose of this filter. Don't worry, this filter we are going to talk in much more detail. Hopefully today we don't get the time, so next session we will going to discuss about that. Today we are going to get some idea. So I request everyone, if you are not able to understand this CSRF protection, just see this video how I have just called this protected API and just passing this all the steps as mentioned. और इसे पास करने के बाद हम इस तरह first you will try that with this one, and then after try to use the protection as well. Use this statement. Get that. Create this object. So this object I have created on the top. So you can notice where this object I have created, and this object I have supplied over here. Request handler. So this object is basically responsible of generating a token and putting that on your what header. And this class is responsible, CSRF token repository is responsible to matching that token. And this is to append that in a header, your CSRF token filter. The authentication होने के बाद it will be added that in a cookie
That means extra cookie it will be added, this cookie filter. Make sense? CSRF cookie filter का काम क्या है कि एक्स्ट्रा कुकी को थ्रू टोकन तो बन गया, अब उस टोकन को भेजना। तो आप जो ये टोकन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कुकीज के अंदर, ये काम हमारा फिल्टर के बगैर नहीं हो पाएगा. दिस थिंग इज वर्किंग बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फिल्टर. That's what in that header we are sending appending this particular filter as well. जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाए, ये फिल्टर हमारा अटैच हो जाए और ये फिल्टर करे क्या, रिस्पांस में एक XSRF टोकन को भेज दे. That's it. So this application I will also upload that on our LMS. But for if you are feeling still comfortable, that is not comfortable with the normal approach, so what you can do, this is the extra information I have given. If you're not feeling very much comfortable with CSRF protection, you can simply ignore all of them. You can work with CSRF.disable. Does it make sense? But if you are really interested to apply the CSRF protection, why I'm saying that one, because last time when I shared the Spring security related notes, that time I used that CSRF disable only. But some student explicitly requested, कि sir CSRF token काम कैसे करता है, और in our application, in our assignment, or some company they are asking me to disable or work with the CSRF token, release that, and tell me the flow how the CSRF token is working. That's why I have added that in our content. So it is not a minimum requirement, but if you want really interested to deep dive into the security or really interesting in the learning about the Spring security, doing some R&D, then this CSRF token, you know that how exactly it is working. क्योंकि अगर CSRF प्रोटेक्शन जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको दो टोकन मिलेंगे. आप पहले टोकन तो कुकीज के थ्रू ही दोनों टोकन को भेजना है, लेकिन एक कुकी जो XSRF वाला है, हमें हेडर के साथ भी भेजना पड़ेगा किसी प्रोटेक्टेड पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए. That's it. And all the use cases, everything is mentioned in your notes. But still I'm saying, if you're not feeling very much comfortable, you can simply disable this. Okay, now the next thing is that here, that is, this example is mentioned already, filters in Spring security. Filter काम कैसे करता है और JWT filter कैसे काम होता है? Let's put that in the tomorrow session. Tomorrow within 1 hour, because it will take at least 1 hour to complete this JWT and this filter. It's a very simple, three examples will be there to apply that filter at all the three level. That means add filter after, add filter before, add filter at. Filter होता क्या है? Once per request filter, filter chain, ये कैसे काम करता है? At least what you will do, try to just go through these notes. Everything is written in a very simple manner. But still, if you are not able to understand, don't worry. Tomorrow we will start from here. Filters in Spring security. It will take at least 45 minutes to 1 hour to complete that JWT with all these things. In fact, all the examples are copy pasted, running examples. So you can just copy paste and you can try to understand this example as well. And tomorrow itself, we are going to start that our unit testing. So that's it for the today's session. I hope you enjoyed the session. You know that what is that authentication, role-based authorities, course configuration, and CSRF protection. Some idea we took that about the filters, but not in much more details. How to work with the filter, we will see on tomorrow's session in detail. Thanks once again, everyone. Zakir, are you there? Yes, sir. Let me pause the recording.